Good morning, everyone. How are you? Good to see you back on a Saturday. I see most of you have joined today on time. Happy to see that. Let's see who all have joined in and then we start. Okay, I see Ankita is there. Happy Mahashivratri to you as well, Ankita. Anushka is there. Aisha is there. Nikita, Surya, Mahek, how are you? Very good morning. I am good, Mahek. Thank you so much. Hope you're also doing great. Hey, Tamanna is there. And happy Shivratri to you as well. Pramod, Arpisha, Nishit, Soumya Ranjan, very good morning. Namaste, how are you? Manish, Lisa, how are you? Good, good, good. I'm doing good, Manish. Thanks for asking. Good to see all of you joining in early today, huh? We still have like what, 10 more seconds to hit 11 a.m. and now we're at 11 a.m. Got it. Great. Any questions, any doubts? We did chapter 1, 2, 3, 4. चैप्टर 1, 2, 3 का रिवीजन भी कर लिया. बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है. सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हैं and we have ample time on our hand, right? We have 4 more sessions to go. आज, कल and next week, Saturday and Sunday. 2 sessions तो हमको chapter 5 में लग जाएंगे, right? So today and tomorrow we will be doing chapter number 5. Next week, Saturday, we'll do chapter number 6. And Sunday, we'll do a full revision. We'll talk, have conversations around examinations. You want to ask any questions about how I did things, what I did, who am I, what I do on a daily basis. We'll talk about myself. We'll get to know you as well. I'll have some questions from all of you. What are your aspirations? क्या करना है? Job में जाना है? Practice में जाना चाहिए? Open-ended questions about the course, about the examinations is what we'll do next Sunday. Today and tomorrow, chapter 5. Next Saturday, we'll do chapter 6. And next Sunday, which is next week, last class, what we'll do is we will talk about the course examination, me and you, right? All of you have joined in right now. We have Kevin, Devendra, Mr. Wadekar. Then we have Mujahid is there. Okay, Anjana is there. Shreya, Aryan, Ayushi. Good, good, good. Alpit Uncle is there. Good and happy Shivratri to all of you who are celebrating. And a happy Saturday to all of you who are not. Great. Before I begin, I just want to take 30-40 seconds to understand if you have any questions, any doubts, कुछ समझ नहीं आ रहा है, if things are going too fast or you want me to keep the same pace, right? You want more examples from daily businesses, you want more examples from daily activities that happen around us, right? कुछ भी जो समझ नहीं आ रहा है, you want anything to be explained in Hindi, you want anything to be explained in English, right? Just call that out. It really helps me to make sure that our classes are for value, right? आपको value addition हो रहा है. I am creating some value for you, right? I just want to ensure that for everyone who is active on the classes, everyone who is watching online after we do the live classes, the recorded classes, right? Thanks, Nikita. If everything is crystal clear, I'm super duper happy. If everything is clear, और क्या चाहिए मुझे, right? And I just want to repeat this again. Please be very active in the chat. Ask your questions, answer all the questions, right? These classes are for you. They are free of cost. Free में हो रही है classes. You should gain the maximum benefit. सवाल पूछो, अपने सारे doubts clear करके जाओ यहाँ से, right? You missed chapter 4 completely. Not an issue. Recorded session है, देख लो छोटा सा chapter. It's one of the smallest chapters in the syllabus. फटाफट से हो जाएगा. And we did that in last class. मजेदार chapter, okay? Perfect. Same speed, no doubts. Awesome. Everything crystal clear. Thanks, Shreya, Vaishnavi, Manish, Aditya for calling that out. Great. Thanks, Aditya. Got it. Quick revision. Chapter 4 का आधे सारे chapters के बाद I'll anyway do full syllabus revision, तो वहाँ पे आपका हो ही जाएगा. Right? Chapter 4 specifically का क्या ही करूँगा? It's a very small chapter altogether. But after I complete the entire syllabus, एक 30 minutes का quick run up I'll give you, right? उसमें you'll get to know फटाफट से कि what all we did, what is the revision required and everything, okay? Perfect. What else? All clear? All clear? Super. You did chapter 2 का revision and till cover all promise. What is all promise, Aryan? Okay. ठीक है, super. If everything is comprehensive and clear, let's get into our today's session, which is
chapter number 5, right? Chapter number 5 is interesting in terms of it talks about organizations facilitating business. Okay. We talked about government, we talked about sarkari policies, we talked about the policies that the government makes. Okay, policy क्या होता है, एक सरकार policy कैसे बनाती है, उस policy को implement कैसे करते हैं, how does a policy actually help a business to actually flourish and succeed in what they want to do as their vision and mission statement, right? Chapter number 5 talks about certain government organizations. It talks about certain government organizations that help the businesses, that facilitate business. That means that help the business people to actually do their business in a fair way, in a right manner, in ethical manner. Public का चोरी चकारी ना हो, scam ना हो, right? People are competitive. They are not dominated by someone in the business. There is a fair playground for everyone to do business, right? That is what we are going to learn about, the organizations which facilitate businesses, organizations which actually help businesses to achieve their vision and mission, right? To make money, to make profits while being fair, while being true to what they want to do. Okay, great. Chapter 3 is confusing because उसमें बहुत कुछ याद रखना है. I told you, right? What else? Okay, let's see what questions we have. Great. Chapter 3, doubt रहेगा ही दोस्त, because it is very theoretical. I would say it's a lot of rote learning उसमें चाहिए, but वो भी जरूरी है. देखो, that is what I called out, right? Chapter 3 भी जरूरी है. Okay, let's get back to the agenda for today, right? Let's get back to where we are. We are at chapter number 5, almost there to complete a syllabus, right? And we start with chapter number 5, which is organizations facilitating businesses. Okay. Now there's a question. Now there's a question on your screen. I'm also enjoying the classes, right, Mike? Thank you so much. So there's a question on your screen. The question is, can a business thrive on its own? आपको मैं आज बोलूं, आप एक business करो. You start your business. Can you thrive on your own? Can you succeed? Thrive means, can you be successful on your own? Can you actually do business on your own? The answer is no. The answer is no. You need help from different people. You need help from the government. You need help for money from the banks. You need help from friends. You need help from people who will support your business. Let's take an example. Let's take an example. Okay, you open a shop of, let's say, a laptop. Okay, आप एक laptop or let's say digital shop खोलते हैं जहाँ पे cameras and laptops and mobile phones you're selling. Right? You have a small shop where you're selling laptops and mobiles and everything. Great. What help do you need? Okay. When you open a mobile shop, you need someone to help you to figure out a shop where you can rent, right? आपको रेंट पे अगर दुकान खरीदनी है, अगर आपको रेंट पे दुकान लेनी है, you need an agent, you need a broker, you need a real estate broker who will come and tell you that, boss, पॉकेट ए की मार्केट में, गांधी मार्केट में, सेंट्रल मार्केट में, इस वाली लोकेलिटी लाजपत नगर में, सरोजिनी नगर में, वट एवर द प्लेस इज देयर, राइट? कमर्शियल स्ट्रीट पे है आपका न्यू मार्केट और ओल्ड मार्केट, वट एवर दैट एरिया इज, this is the shop that you can rent. These are the certain options: bigger shop, smaller shop, first floor pay, ground floor pay, main road pay, right? They will give you different options for you to rent a shop. Okay, you need a real estate agent. Once you figure out a shop, you need a builder, a contractor to build that shop. Slabs lagni hai, you have to change the tiling, posters lagne hai, right? You need brands to come to your shop and place their mobile phones. You need dealers. You will call a bigger dealer and say, boss, I've started a shop. I want to keep 700 pieces of Samsung phones. I want to keep 200 pieces of iPhones. I want to keep 500 pieces of Redmi, right? आप call करोगे dealers को. You need dealers to bring in those phones and laptops and cameras, right? You cannot thrive. That means you cannot survive. That means you cannot succeed. Thrive means to flourish, to survive, to grow, to succeed. Okay. You cannot thrive on your own. You need so many people around you to help your business to actually function, right?
इसको बोलते हैं facilitation of business. This is called facilitation of business. That means people come together to help your business, right? Obviously you will pay money to them. Free में कोई help नहीं कर रहा. It's not a charity. But you still need people, you still need other businesses, you still need support from the government. आपको taxes में support चाहिए, आपको loan में support चाहिए, right? आपको insurance करवाना है, right? अपने business का insurance करो. कल को there is a fire in your shop, you need insurance for your business, right? All of this is facilitation of business. Okay, now when I talk about facilitation of business, there are three areas. Okay, there are three areas we talk about. Okay, now give me 1 second. You should look at this chart. I'm not sure why that chart had that. Okay, look at this chart. Funding and non-funding institutions, right? Aids to trade, and then we have point of contact facilitators. Okay, now read this graph very carefully. Take a minute, right? Take a minute, understand this graph that is on your screen, and let me know what do you understand from this. Okay, गलत हो गए चलेगा. 100%. If you're 100% wrong, तब भी चलेगा. We're just learning, right? So look at this graph. There are 3 levels of business facilitation. Business facilitation हमने पढ़ लिया, but there are 3 levels of business facilitation. Okay, read this graph and tell me what do you understand. क्या समझ आता है इससे? क्या समझ आता है इससे? टेल मी. फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, एड्स टू ट्रेड एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर्स. गलत हो गए दोस्त चलेगा. आई नो इट्स टू टेक्निकल, बट एटलीस्ट ट्राई कि क्या होता है ये 3 लेवल्स क्या है. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? I need answers. I don't see an answer yet. सोचो, थोड़ा सा सोचो and tell me. गलत होगा चलेगा दोस्त. I can give you all the answers. I can spoon feed you, right? But maza tab aayega when you think and then you get an answer. What does this graph talk about? The 3 levels of facilitation of business. Great. I see some answers. Funds from institutions, okay, which are investing in our business, which are not, which is funding and non-funding, okay. Funding or non-funding institute needs aids to trade for their survival, okay. What else? Think hard. Let's take 2-3 minutes. थोड़ा दिमाग लगाते हैं, right? Let's use our brains a little. Kevin, the question is, what do you understand from this graph that is on your screen? Involvement of business. Aids to trade is equal to how we deal in business, okay? Funding belongs to banking sector. Funding and non-funding institutions include aids to trade, and further it includes point of contact facilitators. Okay, what else? Banking and insurance comes under funding. Transportation warehouse comes under aids to trade. Real estate comes under point of contact. Let's see if that is right. Transport, communication, warehouse, insurance, banking, advertisement, aids to trade meaning helping a business to grow, cash good employee. There are organizations which facilitate business like funding institutions. Great. Okay, now let me tell you what this graph actually means. Great answers. You understand. आपको meaning समझ आ गया, but अब flow समझते हैं, ठीक है? The answers are right. Funding, non-funding institutions. Some institutions are going to give you money to do business. Some institutions are not going to give you money, but are going to support by creating an environment. समझेंगे इसको, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? Aids to trade and point of contact facilitators. Simple है दोस्त. Let's go back to this one, ठीक है? Let's go back and understand. एक फटाफट से छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं and then let us see what does this actually mean. कोई मजेदार कलर लेते हैं, पर्पल लेते हैं, चलो, ठीक है? Now, what do we understand by these 3 levels? Okay. Now, this is me, okay? Let's say this is me. ये कैसा मैं बना देता हूँ अपने आप को. This is me, okay? This is me. Now, I am starting a business. Okay, now listen to this very carefully. This will clear everything about this chapter. इस चैप्टर में सबसे कंफ्यूजिंग यही टॉपिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है. You have to be very focused
And with this example, everything is going to be clear forever. हमेशा के लिए clear हो जाएगा, ठीक है? Now, I am starting a business. I am starting a business. Same laptop camera, mobile phone ka. Okay. I am starting a business. I am starting a business to make money. मैं phones, cameras, laptops बेचूंगा, right? I want to start a shop. Now, what do? I will go and need अ शॉप, ठीक है? मुझे एक शॉप चाहिए रेंट पे, राइट? मुझे सामान चाहिए, आई नीड गुड्स। मेरे को लैपटॉप चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चाहिए अपने शॉप में रखने के लिए। आई नीड प्रोडक्ट्स इन माई शॉप। ओके, नाउ व्हाइल आई डू ऑल ऑफ दिस, आई नीड टू इनकॉर्पोरेट माई कंपनी। चैप्टर नंबर 1 याद है? लेट्स से मुझे एलएलपी खोलनी है। टू डू दिस बिजनेस आई वांट टू ओपन एन एलएलपी इन माय नेम। मुझे एक एलएलपी खोलनी है टू डू दिस बिजनेस। ओके, आई वांट टू मैनेज माय टैक्सेस। Okay, I want to manage my taxes and open an LLP. I need a chartered accountant. Okay, I bring in an architect. एक architect को बुलाता हूँ, कहता हूँ दोस्त मेरा ये जरा शॉप अच्छे से डिजाइन कर दो प्लीज, ठीक है? आई एम ब्रिंगिंग इन एन आर्किटेक्ट टू टेल देम बॉस मेरी ये शॉप प्लीज बड़ी अच्छे से डिजाइन कर दो। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब आर्किटेक्ट हो गया, टैक्सेस एलएलपी कंपनी बना ली, आई हैव अ शॉप, आई हैव रेंटेड अ शॉप, आई गॉट अ रियल एस्टेट एजेंट, गॉट अ शॉप, गॉट एन आर्किटेक्ट टू डेवलप दैट, गॉट गुड्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स इन माय शॉप, सब कुछ मैंने डाल दिया अपनी शॉप में, एंड आई स्टार्ट डूइंग माय बिजनेस। ओके, व्हेन आई स्टार्ट डूइंग माय बिजनेस आई नीड एडवर्टीजमेंट्स, राइट? I need to have posters. I need to have pamphlets in the area where I'm selling. मैं घर घर pamphlets बेचूंगा. This is a new shop. This is what is opening. I need a printer. I need an advertiser, right? I need someone to help me to advertise about my shop. Okay. Once that is done, what happens is I need a technician. I need a technician कि कोई फोन की सर्विस कराने आया, लैपटॉप की सर्विस कराने आया। जेठालाल की शॉप में यू हैव बागा ऑल्सो, जेठालाल की शॉप में यू हैव नट्टू काका ऑल्सो, राइट? All these people, I need people in my shop as well, right? After all of this is done, somebody will come and say, boss, can you deliver this laptop to my house? I need someone to deliver this product. I need a delivery partner as well, right? I need a delivery partner as well. Somebody is going to pick this up and deliver to like 4-5 kilometers away or 10 kilometers away, right? Then to grow my business, think about a business person, think about a business person. अब मेरे को business बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं online भी चला जाऊंगा, right? I want to do my business online as well. मैं Amazon पे, Flipkart पे, Meesho पे, I will go, Tata Click पे जाऊंगा, wherever I can find, right? I will go on these platforms and start selling as well. When I do that, I need to have a GST number, right? I need to have a GST number. Need to have invoicing, right? GST hona chahiye, registered company honi chahiye, right? All my documents should be in place. I need a legal consultant. I need a legal consultant to be online, to be present online, right? ये सब मुझे चाहिए. I need all of this. When even if I'm doing a small business, right? Imagine the quantum of activities that big businesses are doing, that huge companies are doing. A small shopkeeper, a small business person also needs all of these. You, right? Any one of you, he or she, whoever wants to do any kind of business, right? You need all of these things. These are facilitators of business. But we divide all of these, all इन सबको हम 3 levels में बांटते हैं. We divide all of these, into 3 layers of facilitation. 3 layers of facilitation based on what? Based on what इनको divide करूं? I will divide them based on the proximity to my business. What is proximity? Proximity means closeness, right? Closeness means मेरे से कितना ज्यादा closely daily basis पे कितनी transaction है, right? Out of all of these, I divide all of these into 3 layers based on one parameter, that is proximity. Proximity means closeness to my business. Closeness to my business means on how much, who is working with me the maximum on a daily basis, right?
मेरे साथ इन सब में से सबसे ज्यादा डेली जो काम कर रहा है, द पीपल, द बिजनेसेस, द फैसिलिटेटर्स हु आर वर्किंग विद मी ऑन अ डेली बेसिस, point of contact facilitators, people who are working with me on a daily basis. Rose, almost daily, I am communicating or working with them. They are the facilitators of my business. I work with them on a daily basis. Number one, point of contact facilitators बोलते हैं उनको, right? People, businesses, organizations with whom I am not on a daily basis transaction nahi hai. I'm not transacting on a daily basis, but whenever I need their help, whenever I need their help, that is called aids to trade. They are my aids to trade. Whenever I need their help, I will go to them for help. They are my aids to trade. मेरी मदद, मेरे धंधे के मददगार हैं, right? Point of contact is I am contacting them daily. Point of contact facilitators, aids to trade, not on a daily basis. Whenever I need them, I go to them, pay them, and get their help. Okay. Final is funding and non-funding institutions. These are government institutions. ये सरकारी institutions होते हैं that create the environment for the entire country. पूरे देश के लिए एक business का environment बनाते हैं. These are funding and non-funding institutions like RBI, like SEBI, like Competition Commission of India, like NABARD, right? Insurance Commission of India, right? All these are funding and non-funding institutions who do what? They create a fair, ethical, competitive, and a ground where people in the country can do their business with ease, right? अच्छे से, मजे से, खुशहाली से, wisdom से, like for success, people find it easy in a country to do business. That kind of an environment create करने का काम है funding and non-funding institutions का, like RBI, SEBI, CCI, insurance agent, insurance, IRDAI, then you have NABARD, right? These are called funding and non-funding institutions. When I say RBI, it essentially covers the banking sector. आपके लिए पैसा, क्रेडिट चाहिए, मुझे लोन चाहिए, वो एनवायरमेंट बनता है, इजीली लोन मिल रहा है. कंपटीशन कमीशन इंश्योर्स की कंपटीशन फेयर है पूरे देश में, right? SEBI ensures that people can go to share market and get investment from the public, right? General public के साथ मिल के काम कर सकते हैं, right? All of this happens because of funding and non-funding institutions. Okay, great. Three layers based on proximity, based on the daily transactions that you do with the business. Number one, point of contact facilitators. Number two, aids of trade. And number three, funding and non-funding institutions. All of these are facilitators to business, right? All of these are facilitators of business. ठीक है? Cool. बढ़ सकते हैं आगे, समझ सकते हैं in detail of each of these items. Do you understand the concept now? Facilitators of business in three layers. Give me a thumbs up. Give me a yes. If it's still not clear, let me know. I will explain it. This is important before I go ahead, right? This is really important. And it is super easy. Super easy. What if someone gives your shop for rent? तो अच्छा है ना, आपके लिए बेनिफिट ही है, बट हर किसी को नहीं मिलता. वी आर स्टडिंग इन अ जनरल टर्म, आर्यन, राइट? अब आप बोलोगे यार ये तो अनन्या पांडे को सीधा फिल्म्स मिल गई, उसको तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. बाकी कार्तिक आर्यन को तो करना पड़ गया ना, रणवीर सिंह को तो करना पड़ गया ना. सो जनरली बॉलीवुड में स्ट्रगल करना पड़ता है. दैट इज जनरल. सम पीपल विल नॉट हैव टू स्ट्रगल. दैट डजंट मीन नोबडी हैज टू स्ट्रगल. सेम थिंग गोज है, राइट? जनरल लोगों को तो रियल एस्टेट एजेंट के पास जाके ही देखना पड़ेगा ना, हर किसी को थोड़ी ना रेंट पे मिल जाता है ऐसे ही, right? So whenever we study what is general in the industry. Okay, great. Whose answer is right? आर्यन, क्वेश्चन क्या है? किसका आंसर ठीक है? क्वेश्चन क्या है? Who is an incubator? We'll come to that. एक स्टेप आगे चल रहे हो आप मेरे से, आएंगे उस पे भी. Awesome. What is ease of doing business? अंकित,
धंधा करना आसान बनाने को बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको कोई रोक टोक नहीं है, देयर नोबडी कंट्रोल्स योर डिसीजन मेकिंग, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, यू आर राइट मनीष, यू आर एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट, ग्रेट। थर्ड पॉइंट रुचिएगा, वील कम टू दैट। अब एग्जांपल्स के साथ चलेंगे, राइट? अब एग्जांपल्स के साथ चलेंगे, आपको ईच ऑफ दीज लेयर्स विल नाउ मेक मोर सेंस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लेयर विच इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर्स क्या चीज है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, बिजनेस लेवल इन्वॉल्वमेंट है इनकी। द फर्स्ट लेयर इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर्स एंड इनकी बिजनेस लेवल इन्वॉल्वमेंट होती है। कि बिजनेस लेवल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, दैट मीन्स डिलीवरी वाले, राइट? टेम्पो से सामान आ रहा है, टेम्पो से सामान जा रहा है, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, ट्रक वाले, दीज आर लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स। These are logistics providers who are helping your business on a daily basis. Incubators. Incubators are early stage mentors, right? Shark Tank देख रहे हो? Shark Tank के अंदर these people are giving them early stage mentorship. This is what you should do. These are consultants. These are people who are helping your business as mentors, as teachers, as gurus, right? इनको बोलते हैं incubators. These are incubators who are helping your business as gurus, mentors, teaching you what is right, what is wrong, what you should do, giving you a way, giving you a path for your business कि ये करोगे तो फायदा होगा, वो करोगे तो फायदा होगा। इनको बोलते हैं इनक्यूबेटर्स। ओके, इनको बोलते हैं इनक्यूबेटर्स। इंग्लिश में आप समझोगे, इनक्यूबेटर इज वेयर यू कीप स्मॉल एग्स, जो अंडे होते हैं, राइट? अंडों को इनक्यूबेटर में रखते हैं ताकि उनको हीट मिले, उनको वार्मथ मिले और उसमें से चिकन निकले। So incubator is where businesses go understand, learn and grow into a big business. वहां से वर्ड आ रहा है incubator। ठीक है, same goes for with kids, right? When you are in fetus, right? अब जब newborn babies are in incubators, they grow there, they get all the supplies, उनको खाना, पानी, हवा, सब चीज कैसे पाइप्स लगा देते हैं, and till they are self sufficient, जब तक वो खुद सब कुछ नहीं करना सीख जाते, right? वो उसको बोलते हैं incubator। वहां से ये वर्ड आ रहा है for business। When the businesses are small and young, they need mentorship, they need support. People, businesses, organizations, wealthy people, big banks, big investment banks, big like companies or investors like Shark Tank में आप देख रहे हो, all these mentors, gurus, they incubate businesses, right? They mentor businesses and then they take profits from them. Okay. नंबर 3, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, डेली बेसिस पे है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैसिलिटेटर है। मर्केंडाइजर, मर्केंडाइजर जैसे बेसिकली द डीलर्स जिनसे आप सामान लेते हो, होलसेलर्स, राइट? होल फ्लिपकार्ट, Amazon, ये आपके बन गए मर्केंडाइजर्स, राइट? पीपल हु हेल्प डिजाइन योर प्रोसेसेस। फ्लिपकार्ट, Amazon क्या बोलता है? आपको कुछ नहीं करना है, आपके हम दुकान से सामान उठा के बेच देंगे। वी विल डिजाइन द प्रोसेस फॉर यू, राइट? मर्केंडाइजर्स। और होलसेलर कि मैं आपके दुकान में सामान माल डंप कर दूंगा। द होलसेलर सेज I will provide all the products in your shop. When you sell, give me the money. Okay. The brands come and tell them, I will put all my products in your shop. When the customers come and buy, give me the money. Not a problem. I will develop that process for you. These are merchandisers, people on a daily basis. ठीक है? People on a daily basis. नंबर सेकंड लेयर दोस्त हमने पढ़ी, एड्स टू ट्रेड। सेकंड लेयर हमने पढ़ी एड्स टू ट्रेड, राइट? इसको क्या बोलते हैं? एड्स टू ट्रेड, जिनसे डेली बेसिस हमारा काम नहीं हो रहा है। रियल एस्टेट वाला, रोज थोड़ी ना रेंट लेने जा रहे हैं, एक बार शॉप ले ली, हो गया, राइट? अभी इफ आई हैव टू चेंज माई शॉप, आई विल गो टू अ रियल एस्टेट एजेंट अगेन। इफ आई वांट टू इंक्रीज, आई वांट टू मेक 2 more शॉप्स, आई विल देन गो। डेली तो मेरा काम नहीं है। इंश्योरेंस वाले के पास डेली तो मेरा काम नहीं है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ गुड्स, दैट मीन्स द बिगर पार्टी जिनके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, राइट? डू नॉट कंफ्यूज दिस, द ट्रांसपोर्टेशन वर्डिंग विद द रिक्शा वालाज और द टेम्पो सर्विसेज। These are big logistic companies जिनके साथ you do annual contracts and वो अपने आप काम करते रहते हैं आपके लिए, right? There is an annual contract कि आप डिलीवरी करोगे और हम आपसे माल बेचेंगे, right?
डेली उनके साथ मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है, मेरा कोई डेली उनसे इंटरेक्शन नहीं है. इट्स एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट आई हैव डन विद सम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और व्हाट एवर सर्विसेज, थर्ड पार्टी सर्विसेज. सॉफ्टवेयर कुछ बनवाना है मुझे, कंप्यूटिंग बिलिंग सिस्टम बनवाना है, व्हाट एवर इट इज, राइट. दैट कम्स इन टू एड्स ऑफ ट्रेड, राइट. दैट कम्स इन टू एड्स ऑफ ट्रेड. ओके. विच जहां पे मुझे डेली इंटरेक्शन नहीं है, I only do an annual or a biannual. जब भी जरूरत पड़ती है, whenever I need to, I take their help. That is aids to trade. Okay. And the final one is funding and non-funding institutions. RBI, SEBI, CCI, IRDI, and development banks like NABARD. Right? इसको डेप्थ में पढ़ेंगे. चैप्टर 5 दोस्त पूरा इसके ऊपर है. चैप्टर 5 ये है हमारा चैप्टर नंबर 5. We will study about funding and non-funding institutions in depth. In depth, right? Employees will be your point of contract facilitators, the daily basis, right? Funding and non-funding institutions is what we are going to focus in chapter 5. पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, right? But to understand ये funding and non-funding institutions आ कहाँ से रहे हैं, it is important to understand facilitators of business. It is really important to understand facilitators of business. उसके बाद आप समझोगे funding non-funding institution आ कहाँ से रहा है. ठीक है. Now, when I say funding and non-funding, when I say funding and non-funding institutions, एक चीज बड़े ही ध्यान से समझना, right? Whenever I say funding institutions, that means these institutions of the government, सरकारी institutions which give out money to the business, पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर करते हैं to help you. They transfer money to your bank to help your business, to support your business, to facilitate your business are called funding institutions. But institutions which are not transferring any money, which are not transferring any money, but are only creating a fair environment. क्या कर रहे हैं वो लोग? They are creating a fair environment to help you do business with ease, with simplicity, without any लोचा झमेला, without any drama, right? उसको बोलते हैं नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस. उनको बोलते हैं नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. चैप्टर नंबर 5 दोस्त पूरा यही है. ये है चैप्टर नंबर 5. Funding and non-funding institutions of the government, and how do they facilitate businesses, और ये business की help कैसे करते हैं, and how do they facilitate businesses. ये है chapter number 5. Okay. I'll take a pause of a minute and see if we have any questions. If something is not clear, absorb whatever I said in the last 20 minutes. 20 मिनट लगातार बोला है मैंने. Absorb what I said, understand what I said, think, get some examples in your head and ask me questions if you have any. And then we go to our main topic of the chapter, which is government institutions, non-funding and funding. Okay. Take a minute and let's see if you have any questions. Arden, all clear? Good to know that. Nikita, crystal clear. Super. Let's wait for others. Let's see what they have. I would really appreciate if you have any questions. Do not hesitate, bhai. I can't see your face. Only you can see my face. I should hesitate, right? आप तो मस्त लैपटॉप के पीछे कुछ भी टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन दोस्त. वैसे भी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पूछने में तो. All clear, all clear. Good, good, good. Thanks, Manish. Thanks, Imran. Thanks, Amir Ranjan. Thanks for letting me know. I want a thumbs up from everyone who is active. Please be active, guys. मजा तो तभी आएगा. इतना मैं बोल रहा हूँ सामने से कम. I need everyone to give me a thumbs up. Okay, ask me questions. कुछ भी लिख दो भाई. मेरी स्क्रीन भर दो प्लीज. So that I know लोग सो नहीं रहे हैं.
Surya will come to that. That's a great question. Okay, Surya. The question that Surya has is, he's asking, I'm confused between banking, जो आपने age to trade में बताया, और funding institutions जो आपने ऊपर बताया हमें, funding and non-funding institutions में, how are they different? Surya, great question. Okay. Now, I told you funding, non-funding institutions are creating an environment. ठीक है? RBI is creating an environment की getting loans is easy, right? Getting loans is easy. This is the interest rate. Interest rate should not be more than 10%, or interest rate should be between 8 to 10%. All of this environment is created by RBI, which is funding non-funding institution. Okay. Banks who are actually executing this environment, banks who are actually executing the money transfer for your business are aids to trade, because आप बैंक के पास हर साल 2 साल में जाते हो. Whenever you need money, you go for help and they help you. That is why they're in aids to trade. While funding institutions, they are huge institutions. We're not talking about banks here. We're talking about government institutions, okay? Banks are not government institutions. Banks are not government institutions. Government institution is RBI. बाप है सारे banks का, right? That is what we are talking about when we talk about funding and non-funding institutions. While banks are your aids to trade, whom you reach out on a regular basis whenever you need money, and they help you, right? ये है difference. Great. और thumbs up. बीच में किसी ने कोई जहर की बोतल भी भेजी है मुझे. Very good. Thank you. क्लास के बाद खाऊंगा, अभी नहीं. केक भी भेजा है. Thanks. केक है, जहर की बोतल है. बढ़िया. Cool. Let's go to the next topic, which starts where we left off right now, which is funding and non-funding institutions. Okay. Now tell me one thing. अभी पढ़ा हमने. What is the difference between funding and non-funding? What is the difference between funding and non-funding? I want all of you to please type that answer in the chat box. वो clear हो गया ना एक बारी? सब कुछ, it is super simple. Cake walk है ये chapter. Okay. What is the difference between a funding and a non-funding institution? Difference between a funding and a non-funding institution. Major difference क्या है? Type your answers. I want you to type this because ये याद हो गया तो chapter is over. उसके बाद कुछ नहीं है, बस simple समझना है क्या कर रही है ये institutions. If you understand difference between funding, non-funding, the answer to every question for every institute ki why and how are they helping the business, right? We are studying facilitation of business. Business की मदद ये कैसे कर रहे हैं, इसका आंसर यही छुपा है. The difference between funding and non-funding के difference में there is an answer hidden for all your questions. How the hell is this organization helping a business, right? Non-funding, which provides good environment. Funding, which gives money. Super. Okay. Non-funding gives guidelines. It creates an environment. Okay. Helps us with money is funding. Non-funding does not help with money, but with help in creating an environment to do a business. Sorted. Right. Funding institutions provide money to run a business. Non-funding provide environment to run a business. Institutions facilitating money are funding, and non-funding deals with other aspects like creating a good place to work, ease of business, liberal policies, less drama in the political, right, in competition. और ऐसा ना लगे कि यार I am being dominated, मैं तो business कर ही नहीं सकता, ये तो भाई अमीरों का देश है, right? The business people should not feel ki, yeah, boss, I don't want to do business in this country. Okay. It is unfair. Only rich people get to make money. If you have political contacts, only then you can do business. ये सब नहीं होना चाहिए, right? To to ensure ये सब ना हो देश में, we have non-funding institutions, right? कि घूस दोगे भी, if you do corruption, तो ये आपका business चलेगा नहीं. पुलिस आएगी, हमें तो परेशान करती है पुलिस बहुत ज्यादा, नहीं होना चाहिए, right? All of this is ensured by non-funding institutions. Okay. All of this is done by non-funding institutions.
Great. Funding help through money, creating environment by transferring money. Non-funding help in creating the fair environment, right? Then non-funding environment like credit, guarantees, etc., etc., etc. Right? श्रुति ठंड चली गई है. How is this a cool session, right? ठंड तो चली गई, गर्मी आ गई, अब तो cool नहीं, अब तो hot हो गया सब कुछ. Okay. Great. Non-funding provide environment like ease of doing business and fairness and competition. Great. Great. You got the concept right, दोस्त. हो गया chapter खत्म. Chapter is done. आज और कल अब जो हम करेंगे is only for exams. Concept clear हो गया. The concept is over. Now what we are going to do today and tomorrow in chapter 5 is only for examination purpose. ठीक है? Simple. Solve हो गया आपका पूरा chapter. You know the concept. You understand the concept. अब सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं. ओके. अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, एग्जाम कैसे होता है, एवरी टॉपिक आई विल टेल यू व्हाट द एग्जामिनर इज गोइंग टू टेस्ट. मजा तो तब आएगा. ठीक है, मजा तो तब आएगा. सिलेबस तो कोई भी पढ़ लेगा दोस्त. इट्स इंग्लिश. यू विल रीड एंड यू विल गेट टू नो. बट एग्जाम में क्या आएगा दोस्त, ये समझेंगे. ठीक है. ओके, लेट्स गेट इनटू अंडरस्टैंडिंग. द फर्स्ट वील स्टडी अबाउट नॉन फंडिंग. उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे फंडिंग को. ठीक है. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वी विल टॉक अबाउट 4 institutions in this chapter. In this chapter, we will talk about 4 institutions: RBI, SEBI, CCI, and IRDAI, which are non-funding institutions. Non-funding institutions means ये environment बना के देते हैं for ease of doing business, for fair, ethical place of doing business. ठीक है, आ जाओ. पहले पढ़ते हैं RBI के बारे में. Let's start with understanding RBI, which is the first non-funding government institution. पैसा नहीं देता है RBI किसी को. RBI is not giving out money. ये लो मुकेश अंबानी जी 5 करोड़ रुपए, ये लो मिस्टर शर्मा 7 करोड़ रुपए, ये लो गुप्ता जी 8 करोड़ रुपए. No, RBI does not give out money. Non-funding institution है, कोई पैसा नहीं देते किसी बिजनेस को, right? But it creates a banking system. It looks after a banking system to ensure people get easy credit. People get easy credit and banks are safe. ऐसा नहीं है लोग पैसा ले लेके चोरी करके भागे जा रहे हैं, right? It shouldn't also happen that people are not repaying the money back to the bank. It's ease of doing both ways. It is a fair play both ways. If the government, if the RBI is giving you ease of credit, it is also ensuring कि आप चोरी चकारी ना करें. You do not fraud the bank. It is ensuring that. It takes 5,000 documents, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ. They will take collateral. घर गिरवी रख दो, गहने गिरवी रख दो, तभी लोन देंगे, right? All of this they do. Why? So that people do not fraud with the bank itself, because banks have public ka paisa. You, me, your parents are putting our money in the bank. That money is used to give out loans to the businesses. अब बिजनेस पैसा वापस नहीं करेगा तो मुझे वापस मेरा पैसा कौन देगा दोस्त, right? To ensure that people feel safe in a country, people have trust in the banking system, there is an environment of trust on money in the country. RBI का काम है दोस्ते. RBI का काम बहुत मुश्किल है. RBI is doing a very tough job, which is creating an essence environment of trust on banks and money in the country. आपको अपने देश के पैसे पे भरोसा है, right? You have trust in the money that you carry. आपकी पॉकेट में अगर 2000 का नोट है, you feel safe, you trust that you can do anything with that 2000 rupees का note, right? You can buy something, you can exchange something. आप घबराओगे नहीं, right? You feel a sense of confidence. Why? That is what RBI does. ये RBI ने ऐसा environment बना दिया है around banking, around money, right? If your bank has 5 crore rupees, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाओगे. आपकी मेरे 5 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं ना, you feel safe कि बैंक में पड़े हैं तो safe है दोस्त, right?
यू आर नॉट, रात को ऐसे नहीं होता अरे बैंक से कोई ले गया तो क्या होगा, नहीं. You have trust in the banking system. That is what RBI does. And that is how it facilitates businesses. That is how it is facilitating an environment where businesses can say, boss, I can do business. Everyone comes and does a Google Pay, Paytm scan किया, बैंक में पैसा चला गया, right? बैंक में पैसा instantly चला गया. They do not have to care about money. Transactions के ऊपर उनको टेंशन नहीं है दोस्त. The दुकानदार is not concerned about the transaction. They feel safe कि हाँ पैसा ट्रांसफर हो गया instantly, right? That entire system, UPI, Paytm वाला system, the barcode scanning system, right? Online payment, digital payment, card swipe हो रहे हैं, right? और online transactions हो रही है, bank transfers हो रहे हैं. All of this infrastructure, the trust in this infrastructure is because of RBI. The RBI has maintained everything, right? This is how non-funding government institutions ensure facilitation of business. A चाप वाला, मोमोज वाला बारकोड लगा के बैठा है, यू गो एंड टकाटक स्कैन कर रहे हो, 100 रुपए के मोमोज खाए, 80 रुपए के मोमोज खाए, राइट? यू स्पेंडिंग मनी ऑन फूड. They are not concerned about transaction. They can focus on your business. They can focus on their business, right? कि और अच्छे बनाता हूँ, यहाँ भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, चटनी दूसरी लाता हूँ, whatever they want to do, right? They are least concerned about पैसा कैसे पहुंचेगा मेरे बैंक में. आरबीआई ने फैसिलिटेट कर दिया ना बिजनेस के लिए. They have created an environment where businesses को exit कर दिया from that stress of money, from that stress of transactions. वो है आरबीआई का काम, ठीक है? Awesome. Let's go to understand RBI in depth. ज़्यादा examples हो गए, ठीक है? Apex body of banking in India. It is India's central bank that regulates the entire banking sector of the country. पूरे देश का बैंकिंग सेक्टर रेगुलेट करता है आरबीआई. रेगुलेट मतलब लुक्स ओवर, सुपरवाइजेस द एंटायर बैंकिंग सेक्टर ऑफ द देश, ठीक है? Reserve Bank's affairs are governed by the Central Board of Directors, who are appointed by the Government of India in compliance with the Reserve Bank of India Act of 1934. दोस्त, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना ही एक्ट है, अपना ही एक्ट है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. और उसके अंदर वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अपॉइंट करती है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, and then they manage the entire operations of RBI, the entire banking sector of the country. ठीक है? Great. The role of RBI. ये हुई ना बात. अब दिखा है कुछ एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक. एग्जाम अब समझ आ रहा है, रे अब तो एग्जाम देने जा रहे हैं हम. कहानियां खत्म हो गई. Points on your screen, right? Every single point is a question. Every single point is a question. Okay? Develop, strengthen, diversify the economic and financial structure of the desh. Develop, strengthen, and diversify the country's economic financial structure. Develop करता है, strong करता है, diversify कर देता है, right? Country's economic and financial structure. RBI. Maintain economic stability in the country. देश की economic stability, right? You feel India is developing. You feel rich as a country, right? What your parents, what your grandparents felt as a country, we feel we have achieved so much more as a country, right? We have come so far. We have become richer than them, right? This is maintaining economic stability in the country, okay? Controls monetary policy of the country. Monetary policy पढ़ के आ रहे हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट में कि मॉनेटरी पॉलिसी दोस्त होता क्या है, पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, ठीक है? एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज. जब सरकार को कोई इकोनॉमिक पॉलिसी, जीएसटी लाना है, राइट, और नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन करना है, it goes to RBI and says, boss, this is what we are planning to do. This is what we think is the right thing to do. What do you think? Is it right? Should we do this or not? Right? Should we do this or not? ये जाके पूछते हैं RBI से. RBI is an advisor to the government. वो advice करता है government को whether you're doing the right thing or you're not doing the right thing. Okay? Represents country in international economic forums. Wherever India is to be represented in a financial forum, in a financial sector forum, जहाँ पे we are talking about the economy, the finances of a country, RBI governor, RBI officers
go and represent our देश. That is what RBI's role is. That is what RBI का role is. ये चिकन रोल एग रोल नहीं है, ये ROLE वाला रोल है दोस्त. ठीक है. Develop adequate and sound banking system for growth of money markets. बैंकिंग सिस्टम बनाना एक पूरा, कि प्राइवेट बैंक्स होंगे, पब्लिक बैंक्स होंगे, ट्रांजैक्शंस होंगी, क्रेडिट कार्ड होगा, यूपीआई होगा, डिजिटल पेमेंट होगा, एटीएम मशीन्स होगी, कैश निकलेगा, कैश की लिमिट इतनी है, यू कैन नॉट डिपॉजिट मोर देन 1 लाख रुपीज इन अ डे, यू कैन नॉट विदड्रॉ 20,000 से ज्यादा कैश इन अ डे, राइट. 2,000 रुपीज के नोट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, 500 का नोट होना चाहिए, 100 का नहीं होना चाहिए, 200 का नोट होना चाहिए. ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस इज आरबीआई दोस्त. Okay, it's a friend, philosopher and guide to commercial banks. HDFC को कोई guidance चाहिए, HDFC बैंक को कोई मदद चाहिए, HDFC बैंक needs some help, some advisory, some anything, any kind of help, any kind of guidance, any kind of advice. Hello RBI, I need your help. RBI is the friend, philosopher and guide of commercial banks. उनका बड़ा भाई है, उनको समझाता है ऐसे करो, ऐसे मत करो, आप फंस जाओगे, ये वाला लोन अगर आपको रिस्की लग रहा है, दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर एसेट्स, दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर लाइबिलिटीज, दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर लोन्स, राइट. Friend, philosopher and guide to commercial banks. Tries to control inflationary trend. Inflation that is there in the desh is controlled by RBI. RBI tries to. It cannot fully control नहीं कर सकता है, but it tries to control inflation by increasing the interest rate, decreasing the interest rate, जिससे people get more power to spend or to spend less, right? If the interest rates go higher, मैं तो invest करना शुरू कर दूंगा. Think about this, okay? Very basic chartered accountancy students should know this. Simple concept है. Let's say you have 1 लाख रुपीज, ओके, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, और आज के दिन इंटरेस्ट रेट, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट बैंक में डालते हो, इफ यू डिपॉजिट 1 लाख रुपीज इन बैंक, यू गेट 5%. टेक एन एग्जाम्पल, ओके, आपको 5% मिलते हैं. नाउ आरबीआई सेज कि यार ये 5% की जगह 10% कर दो. नाउ इफ यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक, यू विल गेट 10% इंटरेस्ट रेट. क्या करोगे बताओ? You were getting 5%, but now RBI says, let us give them 10%. देश के हर आदमी को बैंक में पैसा डालने के लिए हम 10% इंटरेस्ट देते हैं. पूरा देश क्या करेगा दोस्त? पूरा देश क्या करेगा? पूरा देश क्या करेगा? They'll start investing, they'll start depositing, right? They will start putting money back into the bank. Bhai, I am getting more percentage. I will start depositing my money in the bank. When I deposit my money in the bank, when I deposit more money in the bank, how will it control inflation दोस्त? मुझे ये बताना. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी. कैसे? I've just given you a hint. Ki people will put all their money in the bank. But how will this control inflation? How will this control inflation? Exactly. श्वेता तो अपना घर बेच के बैंक में पैसा डाल देगी 10% के लिए. श्वेता रहोगे कहाँ? सड़क पे. ये मत करना, प्रॉपर्टी बेच के बैंक में पैसा रख दे तो बैंक में नीचे जाके एटीएम के अंदर जाके सोगे क्या? I'm just joking, but ठीक है. You want to sell your house, your call. You are a chartered accountant, future chartered accountant. You know your finances. People will spend less and invest more. Correct, Smriti, you're right. Right? Money circulation will decrease, not increase. When people start depositing more money in the bank, मतलब खर्चा नहीं करेंगे. पैसा तो बैंक में डाल दिया, खर्चा कैसे करेंगे? अब मैं जाके H&M, ज़ारा जाके 5,000 रुपए की जीन्स, 2,500 रुपए का टॉप, ठीक है, 800 रुपए का स्कार्फ, राइट, 6,000 रुपए का बैग नहीं खरीद सकता.
नहीं खरीद सकता। मेरे पास 1 लाख रुपए पहले होते और बैंक में मुझे 3-4% मिल रहा था, आई विल से ब्रो आई विल जस्ट गो एंड स्पेंड दैट मनी ना। व्हाई विल आई रन फॉर 3-4% ऑफ इंटरेस्ट रेट? आई विल एंजॉय माई लाइफ। 4% के इंटरेस्ट के लिए क्यों मरूंगा मैं? आई विल गो एंड आई विल एंजॉय माई लाइफ, आई विल लिव लग्जरी। मजे करेंगे, स्कूटी खरीद लेंगे, बाइक खरीद लेंगे। बट इफ आई एम गेटिंग 10% इन बैंक, आई एम लाइक नहीं 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 नहीं, आई डोंट वांट टू स्पेंड दिस मनी, बट आई वांट टू गो एंड इन्वेस्ट दिस बिकॉज इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है। When people start saving more, inflation धड़म से नीचे गिरेगी। Why? Because inflation is because people are spending more. लोग ज्यादा खर्चने की ताकत है तो ही तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आज if the milk, Amul milk is 105 rupees for 2 liters, you and me are still buying it because we are able to buy it, right? हम खर्चा कर रहे हैं। द मोमेंट एवरीबडी सेज बॉस पैसा ही नहीं, हम तो नहीं खरीद सकते, दूध खरीदना बना से दूध पीना बंद, बिकॉज द मिल्क इज टू कॉस्टली, द मिल्क इज टू कॉस्टली, राइट? आज से पीना बंद, तो क्या होगा? आमूल कहेगा दोस्त कोई खरीद ही नहीं रहे, सस्ता करो, जल्दी से प्राइस गिराओ ताकि लोग वापस खरीदें, बिकॉज आवर सेल्स आर गोइंग डाउन, पीपल आर नॉट बाइंग मिल्क, वी वांट पीपल टू बाय मिल्क, प्राइस नीचे करो फटाफट। वो 105 विल बिकम 98, 95, 90, राइट? इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन मैनेजमेंट बाय आरबीआई। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इट ट्राइज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन थ्रू इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है? दिस इज कॉल्ड ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ट्रेंड। चैनलाइजिंग क्रेडिट इन प्रायोरिटी सेक्टर। आरबीआई फोन करता है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सबको फोन करता है, हेलो दोस्तों सुनो, आई वॉन्ट इंडिया टू बी द नेक्स्ट एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री। लेट्स से इंडिया में चावल एक्सपोर्ट होना चाहिए, वी आर इंपोर्टिंग अ लॉट ऑफ चावल, आवर कंट्री इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ राइस, आई वॉन्ट मोर राइस टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया, आई वॉन्ट मोर राइस टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया, राइट? बिकॉज गवर्नमेंट फोन करती है आरबीआई को, आरबीआई हमारा चावल का इंपोर्ट ज्यादा बढ़ रहा है, वी आर importing a lot of rice, we do not have rice for our people, we have to spend a lot of money to bring rice from China, from Indonesia, from Thailand, from Africa, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। Can we do something to produce rice in our country? RBI says, boss, wait, let me help you, I am your advisor, I am your friend philosopher, मुझे हेल्प करने दो। आरबीआई कॉल्स अप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, सबको फोन करता है, टिंग टिंग टिंग, दोस्त, any business who is doing rice production, any business who is doing rice production, उसको लोन दो सस्ते में। Everybody is getting loan at 10%, राइस प्रोडक्शन कंपनीज को फटाफट से लोन दो 2% पे, 8% लेस कर दो, राइट? दे शुड गेट फ्री मनी टू डेवलप, टू बिल्ड देयर बिजनेस, टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। एचडीएफसी, एसबीआई अपनी लोकल ब्रांचेस को फोन करते हैं, पीपल इन बिहार, पीपल इन छत्तीसगढ़, पीपल इन असम, इन नॉर्थ ईस्ट, पीपल इन महाराष्ट्र, पीपल इन कर्नाटका, अपने बैंक्स को फोन करता है एचडीएफसी का हेड ऑफिस कि भाई ऑल दीज बिजनेसेस, टेक आउट द लिस्ट फ्रॉम योर बिजनेसेस, हुएवर इज इनटू राइस प्रोडक्शन, हुएवर इनटू राइस बिजनेस, उनको फटाफट से फोन करके बोलो वी आर गिविंग आउट लोन्स, इफ यू नीड लोन्स वी हैव अ स्कीम फॉर यू, कम एंड टेक लोन फ्रॉम अस। RBI channelizing credit in priority sectors. Channelizing credit in priority sectors like agriculture, export. I mean, जहां पे priority है सरकार की, be it agriculture. Let's say some for next 5 years the priority of the government is, let's say, railways. तो रेलवे को लोन दो सस्ता। The priority sector for government is education. स्कूल कॉलेजेस को बनाने के लिए लोन दो सस्ता। प्रायोरिटी सेक्टर फॉर गवर्नमेंट लेट्स से इज एरोस्पेस, हमें मार्स पे जाना है, हमें और ऊपर जाना है, वी नीड साइंटिस्ट, वी नीड एरोस्पेस इंजीनियर्स, वी नीड एरोस्पेस प्रोडक्ट्स, द कंपनीज, द स्कूल्स, द पीपल, द एजुकेशन लोन्स इन एरोस्पेस सस्ते कर दो, सस्ते कर दो, सो दैट पीपल गेट इजी एक्सेस, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट। पैसा नहीं दे रहे हैं किसी को, आरबीआई इज नॉट गिविंग पैसा दोस्त, they are only creating an environment to channelize the environment, to channelize the economy in the priority sector. पैसा नहीं दे रहे हैं किसी को, they are creating an environment as a माई बाप, right? They are the head, the apex body। क्या पढ़ा यहाँ पे अभी दोस्त, क्या पढ़ा? apex body है,
सबसे बड़ी बॉडी है बैंकिंग सेक्टर की, एंड दैट इज हाउ इट फैसिलिटेट्स बिजनेसेस, ठीक है? ग्रेट, सिंपल है, एवरीथिंग इज कॉमन सेंस दोस्त, मजेदार है। इफ यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, इफ यू अंडरस्टैंड फाइनेंस, एकदम कॉमन सेंस है, बट मजा आता है, okay? एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेट्स सी इफ यू नो दिस और नॉट। आरबीआई वाज ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, बट लेटर इट वाज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या ये सच है? क्या ये सच है? इज इट ट्रू? आरबीआई वाज प्राइवेटली ओन्ड जब शुरू हुआ था, आरबीआई initially was privately owned, but later it was fully owned by the government of India. और आई शुड आस्क a question in सलमान खान स्टाइल, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि आरबीआई was privately owned but later it was fully owned by the government of India? यहाँ तो 100% भारतीय are saying true. Okay, I'll wait for another 10 seconds for all of you to answer. Be active on the chat, मजा आएगा. If you know answers, ask your questions. I'm telling you, and I'm pretty sure I can guarantee you, people who are always active on the chat are learning 5 times more than others who are not active on the chat. I can guarantee you from my experience. Ankit, you don't like Salman Khan, not a problem. शाहरुख खान का एग्जाम्पल दे दूं? क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, उसका एग्जाम्पल दे दूं? The correct answer is true. RBI was originally privately owned, but after 1949 it was fully owned by the government of India. भारत सरकार उसको fully own करती है after nationalization of our country. ठीक है? Super sir. How RBI maintain economic stability? आ जाओ आगे बढ़ते हैं. अभी तो एक टॉपिक हुआ है तो सिर्फ आरबीआई का, अभी आरबीआई लंबा चल रहा है. The functions of RBI. Abhi, now you will get to know, Nikita, how does it maintain stability in the economy. ठीक है? हमने अभी पढ़ा role of RBI. अब हम पढ़ रहे हैं functions of RBI. Functions of RBI क्या है? Issuer of currency, the banker's bank. It is banker to the government. Issuer of currency मतलब नोट भैया आरबीआई के. Everybody knows on your note, on your currency note, there is written Reserve Bank of India. It is signed by the governor of RBI. Okay. It is the issuer of currency. The bankers bank, SBI, HDFC, ICICI Bank, Yes Bank, Dena Bank, Lena Bank, Karnataka Bank, Punjab National Bank, Canara Bank, XYZ, Bank of Baroda, the Bank of India, whatever bank is there, सबका बड़ा भाई, the बड़ा bank headed by RBI. It is the bankers bank. It is the bankers bank. It is also banker to the government. सरकार का बैंक भी आरबीआई ही होता है. Custodian of foreign exchange. Custodian means करता धरता. The करता धरता, the guardian, the custodian. हैरी पॉटर देखिए आपने? हैरी पॉटर में वो था ना, कौन था आपका? What was that black wolf? I don't remember the name. I don't know. There was Secrets of Azkaban. I don't know. Maybe, right? He was the custodian of that prison, the prisoners of Azkaban, right? So वो custodian था, करता धरता था, right? Custodian of foreign exchange, right? Custodian of foreign exchange. देश के पास जितना भी foreign exchange है, देश के पास जितना भी foreign exchange है, everything का custodian is RBI. ठीक है? उस सब का custodian is RBI. Okay? Controller of credit. देश में कितना लोन होगा, किस रेट पे इंटरेस्ट रेट होगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. प्रमोशनल फंक्शंस, राइट?
यूपीआई को बढ़ावा दो, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दो, पीपल शुड हैव वाइट मनी, पीपल शुड बी ऑन बार कोड, राइट? बार कोड होना चाहिए हर जगह। ये आई डोंट नो व्हाट, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ बार कोड, राइट? तो मन कर गया मेरा। ओके, सो प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ promoting UPI, barcode, digital payments, right? Ensuring these new startups and companies are not making a fool of the people, राइट? यूपीआई, गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, रेजर पे है, अमेजन पे है, व्हाटएवर इट इज, राइट? प्रमोशनल फंक्शंस करता है आरबीआई। Collection and publication of data. It collects data and it publishes reports for businesses to understand देश में हो क्या रहा है, फ्यूचर क्या है। I'll give you an example जब हम इस पे आते हैं, ठीक है? I'll give you a very interesting example। जो recent example है कि collection and publication of data आरबीआई facilitate कैसे करता है बिजनेस को, ठीक है? कूल। वोल्डोमोड, वोल्डोमोड ये, अरे वोल्डोमोड, मैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। Okay, let's go to the each of these topics, right? I'm going to go very quick, ठीक है? इसमें मैं फटाफट से निकलूंगा. You can read this, refer the PPT, read the study material. You have to, right? But I will very quickly make you understand कि भैया ये करता कैसे है. Okay, ये करता क्या है, इसके functions क्या है. Issuer of currency, you know. I am not teaching what is issuer of currency. Note बनाना, note issue करना is RBI का function. Bankers Bank, all the commercial banks, all the government banks, all the private banks, all the public sector banks, all the private sector banks, everything is headed, controlled by RBI, which is bhaiya Reserve Bank of India. Sab kuch is controlled. RBI controls all of these. A Sirius Black. It was Sirius Black. That is right. क्यों बीच में ला रहे हो? अच्छा ठीक है. I am also getting distracted now. बढ़िया. So Bankers Bank is also RBI. It controls the commercial banking system, right? It controls the commercial banking system with certain tools जिनको बोलते हैं CRR, SLR. ये क्या बता दिया आपने? ये क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? Bankers Bank controls the credit, controls things in the economy through SLR and CRR. यार ये क्या बता रहे हो आप? ठीक है, पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आगे ये भी we are going to cover this in the topic as well. Okay, now it conducts inspections, it audits the banks, right? It audits the banks, it ensures that banks are not being fraud and banks are not doing frauds. It ensures that as well. बड़ा भाई है तो भैया सब कुछ चेक भी करता है, right? It will go and check as well. It helps them, it advises them, but also keeps a check on them कि भैया कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, right? Fraud तो नहीं कर रहे हो, right? That is what it also does. Perfect. Shreya knows what is CRR and SLR. I just saw a question. Give me 1 second. Other authority to issue 1 rupee note, right, Aisha? So 1 rupee note is, I think, done by Mint or Ministry of Finance. It is there is one of the biggest mints is in Pune or Nashik, I think, right? I'm not sure. Pune में है या नाशिक में है जहाँ पे notes बनते हैं. If you get a chance, you should visit that. It's a whole museum kind of a thing. It's very interesting. Correct. Kevin is saying coins are issued by the government and not RBI. 1 रुपए के सिक्के के ऊपर ही जाओ. मैं 2000 के नोट की बात कर रहा हूँ. You guys are concerned about 1 रुपए का सिक्का. But that is right. The 1 rupee coin or इससे 1 rupee के नीचे वाले coins are issued by the government of India and not by RBI, which is a fun fact KBC question, right? Exam में नहीं आएगा वैसे, but good that you know. But it's good to know some general knowledge as well. ठीक है. नंबर 3, ये CRR SLR हम करेंगे अभी. स्ट्रेस नहीं लेना ये क्या पढ़ा दिया एग्जाम में, आगे तो आएगा, बट अभी पढ़ेंगे. ठीक है. बैंकर टू द गवर्नमेंट. For me, we have ICICI, HDFC, Yes Bank, SBI, Canara Bank, Punjab National Bank. सरकार के लिए the government of India का बैंक is RBI. It is the banker to the government. सरकार का जो भी पैसा है वो RBI में पड़ा होता है दोस्त, वो RBI में पड़ा होता है, RBI के पास होता है. ठीक है. Now, if the central government, let's say, for example, there is a natural calamity, right? There were Assam floods, there were Chhattisgarh में कोई problem हुआ, or let's say Karnataka में कुछ problem हुआ, there was an earthquake or flood or whatever happens, a natural calamity or some riots or some disruption happens in any of the state governments.
तो सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स देम अ रिलीफ पैकेज. So Modi ji sarkar for now, right now, but the central government, whoever is in the power, they give help to the state government. They say, okay, we are sending 1,000 crore to the Assam government कि भैया आप अपना relief कर लीजिए, whatever problems there is, a damage of property or food is in abundance नहीं है, खेत खराब हो गए, घर टूट गए, roads खराब हो गई, बिजली disrupt हो गई, there were problems because of a natural calamity, we are sending you 1,000 crores. कहाँ से भेज रहे हैं? HDFC बैंक से नहीं भेज रहे हैं, SBI से नहीं भेज रहे हैं. They're sending through RBI. They are sending through RBI. Reserve Bank of India makes advances to central as well as state governments, right? Government can take loan from RBI to give it to a state government. A state government can reach out to RBI for help that boss, I need money. मेरे को मेरी सरकार चलाने के लिए पैसे दे दो. I will give you interest on that. RBI gives them money. It's a banker to the government, not to the businesses. It is a non-funding institution to the business, but it still gives money to the government because government is not a business, right? आप बोलोगे ये तो पैसा दे रहे तो फंडिंग इंस्टीट्यूशन हो गया. नहीं, बिजनेस के लिए तो ये नॉन फंडिंग ही है. बिजनेस के लिए तो इट इज स्टिल अ नॉन फंडिंग. बिजनेस को पैसे नहीं देते दोस्त. इट इज गिविंग मनी टू द गवर्नमेंट. ठीक है. Advisor to the government, I told you, it advises, gives guidance and everything to the government. Okay, it is advisor to the government, banker to the government के अंदर. The fourth one is custodian of foreign exchange. Forex, dollars, dirham, दुनिया की सारी foreign exchange, not just dollar. सिंगापुर डॉलर है, आपका पाकिस्तानी रुपी है, बांग्लादेश का रुपी है, रुपया है, राइट, श्रीलंका है, इधर उधर यूरोप का यूरो है, ब्रिटेन का पाउंड है, आपका सारा all the currencies that India owns is controlled, is under the eyes, under the supervision, under the management of RBI. RBI is the custodian of foreign exchange reserves of the country. ठीक है. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यहां पे वो यूज करता है SLR और CRR का कॉन्सेप्ट टू कंट्रोल क्रेडिट. इट हेल्प्स टू रेगुलेट द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल. देश के लोगों की खर्चने की ताकत को कंट्रोल करता है RBI थ्रू कंट्रोलिंग द क्रेडिट यूजिंग SLR एंड CRR. ये क्या बता रहे हो? तो दिमाग घूम गया. पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, मजा आएगा, अभी जा रहे हैं उस पे. ठीक है. बट अंडरस्टैंड दैट RBI कंट्रोल्स the credit flow in the country, which essentially controls the purchasing power of the people in the country. ठीक है. लोगों के देश की खर्चने की ताकत, the power to spend money, right, availability of money in the hands to spend money, वो कंट्रोल करता है RBI. कंट्रोल करता है RBI by using SLR and CRR. बट ये SLR और CRR क्या भला है? What are these SLR and CRR? We'll study next after this topic with examples. मजा आएगा. ठीक है. Okay. Pramod, I'll come to that question after this topic. ठीक है. Interesting question लग रहा है पर थोड़ा सा लंबा है. I'll come to that after this topic. Okay. And Kevin, stop spamming the chat. खाली chat आ रही है. Okay. Promotional functions, mobilizing savings, promoting banking, digitization of money, already बता दिया. UPI, digital payments, ATMs, swipe करो, tap and go, tap and this, everything is digital. All your money, घर में बैठे एयरटेल का बिल पे कर दिया, घर में बैठे गैस का बिल पे कर दिया, electricity bill paid online. All this money transaction is happening on the click of your phone. एक टकाटक पासवर्ड डाला, OTP डाला, done. Taxes pay करना, टकाटक online पे किया, done. Promotional functions. It is promoting digital economy. It is promoting digital payments in the economy. This is a function of RBI. Collection and publication of data. ये देखो. यहाँ पे I told you I'll give you an example. Now, what it does is it also publicly gives out its opinions about what is happening in the world
what India's future looks like, what India as in the finances is planning, what is RBI planning for India for the next 5, 10, 15, 20 years. डेटा कलेक्ट करता है, उसको पब्लिकली सबको बताता है कि देखो हमारा देश यहाँ जा रहा है, हम ये करने वाले हैं, दिस इज व्हाट आवर प्लान इज, दिस इज व्हाट आवर कंट्री विल लुक लाइक इन नेक्स्ट 5-10 years. वो सब कुछ बताता है आके बिजनेसेस को. एज ए फैसिलिटेटर ऑफ बिजनेस, द बिजनेसेस नीड टू अंडरस्टैंड आरबीआई की पॉलिसी क्या है, आरबीआई क्या चाह क्या रहा है. ठीक है, उससे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देता हूँ. देयर वाज क्रिप्टो करेंसी रिसेंटली, राइट. अभी तो पता नहीं किधर गायब हो गई, राइट. गायब हो गया क्रिप्टो करेंसी, बट देयर वाज क्रिप्टो करेंसी लेट्स से 6-8 months बैक. आज से 6-8 महीने पहले एवरीवन वाज ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये क्रिप्टो, वो क्रिप्टो, वजीर एक्स, वो ये एक्स, वो दुनिया भर का क्रिप्टो वाज हैपनिंग. ओके, RBI clearly publicly gave out that data that boss, listen, India is not going to support cryptocurrency. We are not going to support any kind of cryptocurrency. We are still a developing nation. Our nation is still very poor. We cannot afford to take so much risk with our currency, with our monetary system. हमारे देश की कैपेसिटी ही नहीं है इतना रिस्क लेने की कि आज 2000 का है कल 50,000 का है, पूरा देश गरीब हो जाएगा इसमें पैसा लगा के. वी कैन नॉट अफोर्ड, वी आर स्टिल अ वेरी पुअर कंट्री. ओके, this is they give out as a public opinion. Now businesses should have understood, the business read that opinion and said boss ठीक है, as a business मुझे भी क्रिप्टो करेंसी में जाके नहीं हीरो बनना चाहिए, बिकॉज माई कंट्रीज एपेक्स फाइनेंस बॉडी इज सेइंग दैट एज ए कंट्री वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. ओके, फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. दैट मीन्स एज ए बिजनेस पर्सन मैं अपनी दुकान के बाहर लगा दूं कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा दोस्त, बैंक में जाके रख नहीं सकता, इट इज हाईली वोलेटाइल. कल को मैं जाके केस करूंगा कि मेरे पैसे लुट गए क्रिप्टो करेंसी में, आरबीआई विल से बॉस लिसन, वी ऑलरेडी टोल्ड यू वी डू नॉट सपोर्ट दिस, वी कांट हेल्प यू, सॉरी, आपको मेरी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी, राइट. आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस क्रिप्टो करेंसी, यू शुडंट कम टू मी एंड आस्क मेरे पैसे डूब गए, मेरे पैसे वापस दे दो प्लीज, मेरी हेल्प कर दो. वी कांट हेल्प, सॉरी, राइट. This is called collection and publication of data, and this is how it facilitates businesses. This is how businesses need to understand दोस्त मेरे देश में हो क्या रहा है, right? And this is where chartered accountants come into picture. अब बिजनेस वाले का इतना टाइम नहीं है समझने के लिए कि क्या करूं, सब कुछ मैं ही करूं क्या, धंधा चलाऊं या ये समझूं बैठ के. दैट इज वाई दे हैव एडवाइसर्स, दैट इज वाई दे हैव कंसल्टेंट्स, एंड दैट इज वेयर यू एंड मी कम इनटू द पिक्चर. We make our money out of this, right? We study what is happening, what is the future going to be, and we tell businesses, दोस्त ये होने वाला है आपके साथ, ये करो, ये मत करो, आपकी मर्जी है, करना है करो, हमारा काम है आपको इन्फॉर्म कर देना, राइट. एंड फॉर दैट वी टेक मनी एज अ सर्विस, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, दैट इज हाउ इट फैसिलिटेट्स बिजनेस, दैट इज हाउ आरबीआई फैसिलिटेट्स बिजनेसेस. ठीक है, वेरी गुड. स्मृति, आपको क्रिप्टो करेंसी नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता भी नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि बड़ी खतरनाक चीज है. अच्छा है आपको नहीं पता. ओके, वी जस्ट स्टडीड फंक्शंस ऑफ आरबीआई एज वेल. रोल पढ़ लिया, फंक्शंस पढ़ लिए, हमें समझ आ गया यार आरबीआई करता क्या है. अभी आरबीआई पका रहा है, कितना सारा आरबीआई पढ़ा रहे हो यार, राइट. बट अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे. बिफोर दिस आई विल टेल यू व्हाट इज एसआरआर एंड एसएलआर एंड सीआरआर. ठीक है, पहले वो पढ़ेंगे एंड देन वील गो बैक टू अंडरस्टैंडिंग सम ways how RBI facilitates businesses. ठीक है, ग्रेट. आर्यन, इंग्लिश है दोस्त, एडवाइसर तो पता होना चाहिए. आप लिख रहे हो वी आर एडवाइसर लिखे, वाटर लिखे, सॉरी माय बैड, आई थॉट यू हैव रिटन वाटर एडवाइसर्स. वी आर एडवाइसर्स, यस वी आर एडवाइसर्स. ठीक है, लेट्स गो टू फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज अंडरस्टैंडिंग बेसिस पॉइंट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, statutory liquidity ratio, SLR, and CRR, cash reserve ratio. मजेदार कॉन्सेप्ट है. All of these are used by the RBI. All of these are used by the RBI to control credit in the economy. To control credit in the economy. ठीक है, all of this is used by RBI to control credit in the economy. देखो आपका ध्यान गया ना सर्कल्स पे. Basis points
repo rate, reverse repo rate, SLR, and CRR. Okay. All of this is used by RBI to control credit and thus the purchasing power in the economy. And thus the purchasing power in the economy control करता है इससे RBI. But कैसे करता है? But कैसे करता है? कैसे करता है? समझते हैं. Okay. पहले समझते हैं basis points क्या होता है. Basis points is nothing, right? But 1%, right? That means 1 basis point is equal to 1 by 100%. ठीक है. 1 by 100%. यार इतना टफ क्यों बना रहे हो? यार इतना टफ क्यों बना रहे हो? 1 by 100% मतलब, अच्छा और सिंपल बना देता हूं इसको, अलग तरीके से समझाता हूं. 100 basis points, 100 basis points, 100 basis points इसको बोलते BPS, बट वी रीड इट एज बिप्स. ओके, आई एम टेलिंग यू, ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम कॉर्पोरेट भाषा. 100 bips, 100 bips means 100 basis points is equal to 1%. 1% का मतलब होता है 100 basis points. ठीक है. 1% is equal to 100 basis points. केविन रंगोली क्यों ना बनाए दोस्त, महाशिवरात्रि हम तो बनाएंगे. ओके. 1% is equal to 100 basis points. Remember this for your life. पूरा जिंदगी, अब तो सीए बनने के बाद जिंदगी सिर्फ बिप्स 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 होता रहेगा आपकी लाइफ में. ठीक है. बिकॉज एवरीवेयर इन कॉर्पोरेट, एवरीवेयर इन योर फाइनेंशियल वर्ल्ड, एवरीबडी टॉक्स अबाउट बिप्स. जैसे कितने बिप्स बढ़ गया, कितने बिप्स गिर गया, मेरा रेवेन्यू कितने बिप्स बढ़ गया, मेरा मार्जिन कितने बिप्स गिर गया. पीपल टॉक अबाउट बिप्स अ लॉट. Okay, bips is basis points. 100 basis points is equal to 1%. अब मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं. ठीक है. 500 crore, 500 करोड़ इज द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी. ठीक है. वेरी इंटरेस्टिंग. हैंड्स ऑन योर कीबोर्ड्स. अब थोड़ा दिमाग चलाने का टाइम आ गया है. हो गई कथा पूरी हो गई. अब थोड़ा एग्जाम लेवल क्वेश्चंस कर रहे हैं. If the revenue of the company is 500 crores and this revenue grew by 50 bips, 50 bips से बढ़ गया, 50 bips से इंक्रीज हो गया, तो रेवेन्यू कितना हो गया? रेवेन्यू था 500 करोड़, 50 बेसिस पॉइंट से रेवेन्यू इंक्रीज हो गया. The revenue was 500 crores and it increased by 50 basis points. How much is the new revenue, दोस्त? ये देखो गुलशन कह रहे 50%. गुलशन सीईओ ना आपके आके, ही और शी विल आके आपको माला पहना देगा. 50% से रेवेन्यू बढ़ गया. ओके, सिमरन हैज गिवन द आंसर. सिमरन देखते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. मुझे तो करेक्ट लग रहा है. देखो, इंटरेस्टिंग. मजा आया ना. 750 करोड़ हो गया. वाह केविन, मजे आ गए. 750 करोड़ रेवेन्यू हो गया. वेरी गुड. आयशा इज रेटिंग 5% इंक्रीज, क्वेश्चन मार्क. आयशा मैं ही तो सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे से क्या सवाल पूछ रहे हो? मनीष कह रहे 50 लाख या 25 लाख. सोचो भाई, दोनों आंसर गलत है वैसे तो, पर ठीक है. आयुषी से 10, 500 करोड़ का 10 करोड़ हो गया, बस गिर गया नीचे. अब टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? मनीष से 5025 करोड़. डेसिमल लगाना भूल गए मनीष, आपको लग रहा है. 5025 करोड़. वेरी गुड. 750. आई हैव ओनली सीन लीजा एंड Simran has given the right answer. Alpi Tangal has given the right answer. Aisha has given the right answer. मनीष का डेसिमल रह गया, वरना आंसर ठीक लग रहा है मुझे. The correct answer is
502.5, 502.5, ये दो क्यों नहीं बन रहा है, 502.5 करोड़, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्यों भैया, क्यों? 1%, 1% is equal to 100 basis points, 100 basis points, तो 50 basis points हुआ 0.5%, 0.5% का ऑफ 500 crores इज 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 crores, 500 plus 2.5 crores is 502.5 crores, सिंपल, दिखा है। अच्छा डेसिमल लिखे, मेरा चश्मा साफ करना पड़ेगा मुझे, रिटन 0.5%, आशा ओके। द करेक्ट आंसर इज 0.5%। याद क्या रखना है, सब भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो दोस्त, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से आएगा ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मजेदार, ओके। ये हमने पढ़ लिया बेसिस पॉइंट्स, ये पीपीटी में भी होगा, फॉर यू टू रेफर, आई विल अपलोड दिस, यू कैन रीड इट, ओके। रेपो रेट, you know RBI is the banker to the banks, RBI भैया is the banker to the banks, rate at which banks borrow money from RBI is called repo rate। क्या, फिर से बताओ, rate at which banks borrow money from RBI, banks borrow money from RBI, not businesses। बिजनेस के लिए तो ये नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूट है, बिजनेस के लिए तो ये नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूट है, बट बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई बिकॉज ये बैंकों का बड़ा भाई है, राइट। द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई इज कॉल्ड रेपो रेट, द फुल फॉर्म इज रीपर्चेज रेट, ठीक है। इट रेंजेस बिटवीन 3.5 to 4.5%, राइट। अभी फिर से चेंज हुआ है, आई एम नॉट रिटन द लेटेस्ट वन, यू कैन गूगल इट, एग्जाम में नहीं आएगा करंट, बट यू शुड नो व्हाट इज रेपो रेट। ये डेफिनेशन पक्का आएगी दोस्त एग्जाम में, देखना, आई कैन गारंटी, ये जरूर पूछेंगे, हर बार ही पूछते हैं। व्हाट इज रेपो रेट? द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, बैंक अगर लोन लेता है आरबीआई से, इफ द बैंक इज बोरोइंग मनी फ्रॉम द आरबीआई, द रेट which RBI charges from them is called repo rate, which is called a repurchase rate. The reverse of this is reverse repo rate, the rate at which banks deposit money with RBI. लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट भरते हैं आरबीआई को, दैट इज रेपो रेट। अपना पैसा दे डिपॉजिट विद आरबीआई एंड दे गेट इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। It is called reverse repo rate. Similarly, like you get interest rate on your savings bank account or FD, fixed deposit पे आपको interest मिलता है, उसको बोल, अगर बैंक अपना डिपॉजिट आरबीआई के साथ करता है, they get interest back, which is called a reverse repo rate, which is called a reverse repo rate. Common sense question पूछता हूं एक, will repo rate be higher or reverse repo rate be higher? रेपो रेट हायर होता है या रिवर्स रेपो रेट हायर होता है, मुझे ये बताओ। रेपो रेट हायर होता है या रिवर्स रेपो रेट हायर होता है? कॉमन सेंस क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझ के आंसर देना दोस्त। आई डोंट वांट एनी रॉन्ग आंसर्स फॉर दिस, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, टेक 30 सेकेंड, सोचो आराम से। रेपो रेट बड़ा होना चाहिए या रिवर्स रेपो रेट बड़ा होना चाहिए? विच परसेंटेज शुड बी हायर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है बोल के डरा दिया सबको। 90% of the जनता says repo rate.
10% जनता से रिवर्स रेपो रेट हायर होना चाहिए। ये जो जनता रिवर्स रेपो रेट को हाई बोल रही है, द जनता हु इज सेइंग रिवर्स रेपो रेट शुड बी हायर, आप बिजनेस मत करना प्लीज, कभी घाटे में जाओगे, यू विल बी लॉस मेकिंग बिजनेस। रेपो रेट इज ऑलवेज हायर दोस्त, व्हाई? आरबीआई विल टेक मोर मनी एंड गिव आउट लेस मनी, राइट? पैसा तो कमाना है, बेसिक बिजनेस सेंस। When you're taking interest from the banks as an RBI, you're taking interest from the bank because you're giving loan versus the interest you're paying when they're depositing money with you. Bank पैसा ऐसे ही तो कमाता है. Reverse repo will always be lower than repo. तभी तो RBI पैसा कमाएगा दोस्त. यही तो मैंने अदनान सामी का लिफ्ट करा दे हो गया. Okay? Repo should be higher. Reverse repo should be lower. तभी तो लिफ्ट करेगा दोस्त. Right? पैसा कमाऊंगा ज्यादा, आई विल अर्न मोर बाय गिविंग आउट लोन्स वर्सेस गिविंग आउट मनी फॉर डिपॉजिटिंग मनी, करेक्ट? रेपो विल ऑलवेज बी हायर देन रिवर्स रेपो. सिंपल कॉमन सेंस, ठीक है? आगे चलते हैं. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR. SLR, ठीक है? अभी इसको समझो दोस्त. वेरी सिंपल, अगेन वेरी सिंपल. बैंक के पास 5 लाख कस्टमर्स है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ICICI बैंक. ICICI बैंक हैज 5 लाख कस्टमर्स, इट हैज 5 करोड़. चलो 5 करोड़ लेते हैं, ओके 5 करोड़ लेते हैं. ICICI बैंक हैज 5 करोड़ कस्टमर्स. 5 करोड़ कस्टमर है. एवरी कस्टमर, लेट अस सपोज deposits 1 lakh rupee, 1 lakh रुपए. All these 5 crore customers have deposited 1 lakh rupee each with ICICI Bank अपने savings account में, ठीक है? Just giving an example. कितने रुपए हो गए ICICI के पास? ICICI के पास 5 लाख करोड़ रुपए हो गए. 5 लाख करोड़ रुपीज ICICI के पास कलेक्ट हो गए. 5 लाख करोड़ रुपए. अब ICICI कह रहे यार मजे आ गए, 5 लाख करोड़ रुपए हैं मेरे पास. हाउ डू आई मेक मनी आउट ऑफ दिस 5 लाख करोड़? मैं क्या करता हूं, ये 5 लाख करोड़ रुपए सारा लोन में दे देता हूं, ठीक है? लेट मी गिव आउट लोन्स टू बिजनेसेस, टू एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, दुनिया भर का लोन दे देता हूं पूरी जनता को, राइट? जिसको लोन चाहिए. 10%, 12%, 15%, 18%, 20%, right? I will charge education loan at 15%, car loan at 18%. Whatever RBI has told me कि ये रेंज रखो, रेंज के मैं उस रेंज के अंदर I will make money. ये 5 लाख करोड़ रुपए लोन देके I will make 12-13% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड. अब ये तो ICICI के मजे आ गए. RBI says बॉस इधर आ. RBI calls ICICI and says, boss, listen, आपने you have given out the entire money that you got as deposits as loans. अब कल को कोई लोग आपके ये 5 करोड़ कस्टमर्स में से if 10 lakh people come to you in a single day and ask for their money, right? Out of this 5 crore, 10 lakh people come, 10 lakh people ask मेरा 1-1 लाख रुपए वापस कर दो. कहां से लाएगा? कहां से लाएगा दोस्त पैसे उनको वापस देने के लिए? दैट इज देयर मनी. You are using their money. It is not your money. You are using their money to make money. And they have the right to ask back their money at any point in time. Correct? कहां से लाके देगा पैसे? ICICI कहते कोई बात नहीं, आपसे लोन ले लूंगा, आप लोन दे देना, मैं उनको पैसे दे दूंगा. RBI कहते भाई ऐसे नहीं होता. This is not how business works, okay? What you have to do is, you have to keep certain percentage of your total deposits as SLR, which is statutory liquidity ratio. Certain percentage of your total deposits that you have from all the people from everywhere, savings, FD, लटरम पटरम, जितना पैसा है भाई तुम्हारे पास, उसका certain percentage you have to keep in liquid assets. In liquid assets, ठीक है? Liquid assets are those assets which are converted into cash very quickly. 11th 12th में पढ़ा है अकाउंट्स में,
लिक्विड एसेट्स हमने पढ़ा है, आपने मैंने 11th और 12th में पढ़ा है लिक्विड एसेट्स. ओके, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में यू हैव टू कीप सर्टेन परसेंटेज सो दैट इफ पीपल कम टू आस्क फॉर देयर मनी, you can quickly convert that cash and give them money. You can quickly convert that liquid asset into cash and give them money कि ये लो आपका पैसा वापस. ठीक है? For now, the range is around 18 to 20%. 18 to 20% of the total deposits bank have to keep as SLR, which is statutory liquidity ratio. आरबीआई कहते हैं इससे भी मजा नहीं है, इससे भी मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है, मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है, लोगों ने पैसा मांगा, यू विल नॉट बी एबल टू पे, राइट? You also have to keep cash reserve ratio. That means वो 18%, 20% in liquid assets, another 3% of your total deposits, right? Of your total deposits, उसका another 3% you keep as direct cash. Liquid asset नहीं, cash form में रखो, पैसा एकदम cash में रखो. 3% of your total deposits. Of your total deposits, 3% दोस्त कैश फॉर्म में रखो. ये मैंडेटरी है, यू हैव टू फॉलो. एवरी बैंक हैज टू फॉलो दिस. एट द एंड ऑफ एवरी डे दे हैव टू गिव आउट द रिपोर्ट टू आरबीआई कि हाँ, हमारे पास 18 to 20%, whatever percentage RBI tells, within 18-20, and CRA is almost between 2.5 to 4.5%. It keeps on changing, right? It keeps on changing. Basis that, right? Basis that आरबीआई नोज कि भाई मेरे को एवरी एट द एंड ऑफ एवरी डे कि बैंक्स के पास 20-25%, 20-25%, right? 20-22% is kept as instant cash conversion, and rest of the money, which is 80% of the total deposits, they can give out as loans. They can give out as loans, right? Now, SLR and CRR. अब मुझे बताओ इससे आपको क्या समझ आया? हाउ डज आरबीआई कंट्रोल द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल इन द कंट्री विद दिस? हाउ डज आरबीआई कंट्रोल द परचेजिंग पावर ऑफ द देश विद दिस हरकत? कैसे करती है? यू नो द कॉन्सेप्ट नाउ. नाउ थिंक एंड टेल मी, how does RBI control the purchasing power of the general people of the Desh using CRR and SLR? बहुत सिंपल बना दी मैंने आपके लिए. They have limited access to what? Complete the answer. Let's see. I'm waiting for answers. They make them to have limited access on the amount. Correct. Okay, what else? वो तो बैंक का कर रहा है, right? The amount of credit is reduced, so limited access to loans. That is right, Simran. What else? If CRR and SLR is high, people will have limited access to money. Simple. Correct? That is what everyone is saying so far, for all of those who have been active on the chat. Okay. If SLR and CRR will increase, then banks can't give loans to public and so on. Purchase power will decrease. Simple. Solve हो गया दोस्त. Lifetime के लिए concept solve हो गया. Lifetime के लिए concept solve हो गया. Right? How does RBI? अभी आप क्या देखोगे कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, एसएलआर बढ़ा दिया, सीआरआर बढ़ा दिया, घटा दिया. You get to know, okay, this is what RBI is doing. If they reduce SLR and CRR, that means they want the country to spend more. That means inflation control में है. That means inflation control में है. वो कह रहे खुला खर्च करो दोस्त, spend your money. We have controlled the inflation. But if they are increasing SLR, CRR, that means inflation is going out of control. This is how you understand your desh ka economy, dost. Right? You're going to become financial professionals. These are simple things that not everybody understands, but you understand now, right? And you know कि मेरा देश कहाँ जा रहा है. But by just understanding these small metrics,
You understand, okay, देश में हो क्या रहा है, right? Inflation बढ़ रही है या घट रही है? And then you can also prepare yourself, your personal finances using it, right? If the inflation is increasing, you start controlling your expenses. खर्चा बढ़ने वाला है दोस्त, start saving more, right? This is what you have to understand from all these metrics. Cool? Okay. When bank will provide loan with low interest, people purchasing power is increased. That is right. इंटरेस्ट गिरेगा या ज्यादा पैसा लोगों को देंगे तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, लोन ही कम मिलेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है दोस्त, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट? क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोग खर्चा नहीं करेंगे. दैट इज हाउ यू कंट्रोल द परचेसिंग पावर. ओके, कूल. दीज वर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. विद इन दिस आरबीआई का लास्ट करेंगे, हाउ डज इट फैसिलिटेट बिजनेसेस. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगले 30 सेकेंड्स में लेट्स डू दिस. करेंसी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड पेमेंट मैकेनिज्म्स. ओके, four ways a business is facilitated by RBI. There are 4 ways that a business is facilitated by RBI. Number one is currency policy. The currency flow in the country, right? Adequate currency for economic activities, demonetization, remonetization, changing of currency. Currency के through it facilitates businesses, right? Foreign currency flow आ रहा है, import export अच्छा हो रहा है. This is how businesses are facilitated. An environment is created for businesses through currency management to help them make their business flourish, successful and safe, right? पेमेंट मैकेनिज्म्स, पेपर बेस से डिजिटल आ गए, यूपीआई आ गए, बारकोड आ गए, राइट? पेमेंट मैकेनिज्म का डेवलपमेंट, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पेमेंट मैकेनिज्म्स इज फैसिलिटेटेड बाय आरबीआई फॉर द बिजनेसेस. Financial systems are being developed, stronger banks, digital banks, one click go, easy loans, the entire financial system. People trust our financial system. It is creating an environment of trust on money, creating an environment of trust on banking system. And that is how it is facilitating businesses. Right? That is to curb black money. A trust की घूस नहीं देनी है, bribe नहीं करना है. We have a strong financial system. I can do my business without corruption, right? That kind of trust is facilitating businesses, right? कौन सा रह गया? Credit policy कहाँ गई दोस्त? अरे, I'll have to put that. But you know credit policy again, right? Using SLR, CRR, repo rate, reverse repo rate. Using all these tools to increase or decrease the credit availability in the economy, right? Again, a facilitation of business by the RBI. Currency policy, credit policy, development of financial systems, and payment mechanism. Cool. Okay. Make SLR, statutory liquidity ratio, a certain percentage of the total deposit that the bank has to maintain, right? And the rest, the balance money, they can give out as loans. तो जो money उनको liquid form में रखना है, उसको बोलते हैं SLR, statutory liquidity ratio. ठीक है? Remonetization, जो demonetization का उल्टा है, उसको बोलते हैं remonetization, right? पुराने नोट वापस लाना is called remonetization. Okay? अब 50 रुपए का पुराना नोट आ जाए, या 100 रुपए का पुराना नोट आ जाए, या 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट वापस आ जाए, उसको बोलेंगे रीमोनेटाइजेशन. इफ 1000 रुपी नोट कम्स बैक अगेन, वी विल कॉल इट रीमोनेटाइजेशन. ठीक है? ओके बॉयज एंड गर्ल्स, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. आराम से पढ़ो और सॉल्व करो. लेट अस स्पेंड 2 minutes on this question. Read the question very carefully. सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको अभी पढ़ाए हैं, इसमें सब कुछ यूज हो जाएगा. बेसिस पॉइंट यूज हो जाएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यूज हो जाएगा, मैथ्स यूज हो जाएगा, ये वाला लॉजिक यूज हो जाएगा दोस्त. हिंट दे रहा हूं, ये वाला लॉजिक भी यूज होगा. यूज एवरीथिंग दैट वी हैव जस्ट स्टडीड टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन. The credit policy only for reducing the purchasing power? No, also for increasing sometimes, right, Aditya? It really depends on where the country is going. It can either increase the purchasing power
or decrease the purchasing power. It really depends on what is the situation of the economy. Okay? It really depends on the situation of the economy. It can either increase or it can decrease. Depend करता है. Take 2 minutes, solve the question carefully. Let's see if you can answer this or not. फटाक से निश्चित का तो आंसर भी आ गया. निश्चित, are you sure? एक बार क्रॉस चेक कर लो. I hope you read the question carefully before answering. I have only 4 answers as of now. Let's see. I'm waiting for everyone who's active on the chat. Please solve this question. Please solve this question. Okay. Majority जनता सही आंसर दे रही है. I'm happy about it. Last 1 minute, boys and girls, be quick. कर लो solve. But last 1 minute. Now I have mixed answers. 9.5, 7.5, 2.5, 4.5 भी आ चुका है. सारे ऑप्शंस आ गए. मजा आ गया. सारे ऑप्शंस आते तो ही मजा आता है. 30 more seconds. 7.5, 2.5, 9.5. भाई सही, सारे ऑप्शंस आ गए. मजे आ गए. मजे आ गए दोस्त. यही तो चाहिए था. यही तो चाहिए था अपने को. Because it's better to be confused and wrong here than in examinations. यहाँ पे जितनी गलती करनी कर लो, कोई नहीं जान, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है. एग्जाम में मत करना दोस्त. 6 महीने पड़ जाते हैं. The worst thing about the course, me being a student as well, the mistakes cost you 6 months and a bit of one night of crying, right? Which is but it's part of the process. वो भी जरूरी है. सीए में रोए नहीं तो क्या ही मजा आया. Let's go to the answer. The correct answer is 9.5%. Majority of you gave the right answer, which I'm happy about. For those who did not, let us quickly understand, okay? Reverse repo is always less than repo. ये तो हमको दिमाग में रखना ही था. ठीक है? If repo rate is 4%, then if reverse repo is 4, then repo will be 350 basis points, which means 3.5%, because 100 basis points is 1%. 100 basis points is 1%. 350 basis points is 3.5%, and reverse repo is always lower than repo. तो अगर reverse repo 4% है, तो repo 4 plus 3.5, which is 7.5% होगा. Very good. Now, if reverse repo rate is increased by 200 basis point, which means 2%, अगर ये 2% से बढ़ गया, तो repo भी we assume कि 2% से बढ़ा दिया सरकार ने, right? तो करंट रेपो रेट हो जाएगा 9.5%. 9.5%. ठीक है? 9.5%, which is the answer, right? The repo rate, new repo rate, will be 9.5%. Reverse repo rate is now 6%. अच्छा, okay, Aisha. New reverse repo rate, new repo rate, माइनस नहीं प्लस करोगे ना आयशा?
क्योंकि रिवर्स रेपो इज लोअर देन रेपो. माइनस नहीं प्लस करना है. 6 में 3.5 प्लस करो, एड 3.5 to 6 becomes 9.5. रिवर्स रेपो इज लोअर देन रेपो ऑलवेज. ये तो आप भूल गए. माइनस क्यों कर रहे हो, प्लस करोगे. नो, एसेंशियली दिस इज कॉमन, राइट. इफ यू आर सेइंग कि रिवर्स बढ़ गया बट रेपो नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता ना. तो फिर तो रिवर्स रेपो रेट से ऊपर चला गया, ऐसा होता नहीं है. सो आरबीआई ऑलवेज इंक्रीजेस बोथ इन द सेम वे, राइट. जनरली जनरली सेम हिसाब से बढ़ाती है और घटाती है, राइट. जनरली बोल रहे हैं, चेंज भी हो सकता है बट जनरली सेम ही. 2%, 1%, 5%, 2 basis points, 10 basis points, 20, 200. It really depends. Okay, it really depends. Perfect. Let's go to the next question. फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Read the question very, very carefully. All scheduled banks are required to maintain a certain minimum cash reserve ratio with the RBI. This provision enables RBI to ensure what? This provision enables RBI to ensure what? Okay. So we'll do another question. वो आपका numbers वाला ना. When I do practice of chapter 5 and 6, उसके बाद भी I have a small quiz for you. उसमें I have this question. ठीक है, वहां पे करेंगे ये. वहां पे फिर से करेंगे. बट इस क्वेश्चन को आप समझिए फर्स्ट. ओके, फिर से करेंगे. मेजॉरिटी जनता सेज ऑप्शन बी. बीच में दो आ रहे हैं सी. दो और आ रहे हैं सी. फ्यू पीपल सेइंग ऑप्शन ए. ठीक है, मजा आ रहा है फिर से. आई रियली लाइक व्हेन मिक्स्ड ऑप्शंस आते हैं. which means the question is tricky. Which means the question is tricky, but it also means you're not understanding the concept. Which also means I'm not able to explain the concept right. ये तो मेरे ऊपर ही आ गया दोस्त. बट ठीक है, क्वेश्चंस आर मोर इम्पोर्टेंट. एक बार समझ जाओगे फिर एग्जाम में सॉल्व करना इजी हो जाएगा. एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, बीसीके इज द मोस्ट स्कोरिंग सिलेबस. भाई इसको तो आपको पकड़ लेना चाहिए कि ये पेपर मुझे पास करवाएगा पूरा ग्रुप, राइट. All scheduled banks are required to maintain a certain minimum cash reserve ratio with the RBI. This provision enables RBI to ensure what? I'll tell you what. Credit position of the country. Answer is option number B. By CRR or SLR are part of credit position of the country. They are credit policy के part हैं. SLR, CRR are part of credit policy. तो भैया ये credit position of the company ही तो संभालेंगे, राइट. तो ये क्रेडिट पॉलिसी जो ही के अंदर अगर आ रहे हैं तो ये क्रेडिट पॉलिसी ही तो संभालेंगे दोस्त. क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री के लिए ही आरबीआई इनको यूज करती है, एसएलआर और सीआरआर को. क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री. ठीक है, दैट इज द मेन मोटिव. दैट इज द मेन मोटिव. Yes, Aisha, that is forex. Rate is foreign exchange. का short form is forex. It is not forex. ये आपके x के लिए नहीं नहीं, वो वाला forex नहीं है ये. This is foreign exchange. Some people say I cry for x. नहीं नहीं, don't cry for your x. ठीक है. Great. Give me a thumbs up if we can just extend today's session by 15 minutes. If you're cool with it, we'll extend the session today by 15 minutes only.
15 मिनट से बढ़ाएंगे सिर्फ। चलेगा गिव मी अ थम्स अप, नहीं चलेगा तो गिव मी अ थम्स डाउन। दे सकते हो। यू हैव एन ऑप्शन टू से नहीं नहीं सैटरडे हमारे एंजॉय करने दो, निकलो यहाँ से। यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट इफ आई कैन एक्सटेंड बाय 15 मिनट्स, गिव मी अ thumbs up. Awesome. Majority people saying thumbs up, so I'll take it as a thumbs up, and we will spend 15 more minutes till 1:15 हम लोग करेंगे ये। ठीक है, perfect. अभी तो केविन समझाया भाई कैसे होता है SLR और RSA क्रेडिट पोजीशन, राइट? Let's go to SEBI. Let's go to SEBI, which is Securities and Exchange Board of India. Right? Securities and Exchange Board of India is called SEBI. अब SEBI facilitator of business कैसे है? Okay. पहले तो समझते हैं SEBI है किसके लिए। Securities and Exchange Board of India is the apex body which manages, controls, develops, and promotes the share bazaar of the country. Right? The share market of the country is managed, developed, promoted, and ensured is functioning in the right ethical manner by SEBI, Securities and Exchange Board of India. ये करता है। हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था ना दोस्त, उसके बाद सेबी बनाया गया, राइट? Just remember this, right? Just remember this, that after a lot of scams happened in the share market of India, right? ये वैष्णवी नो कह रही है, बट वैष्णवी मेरे को 99% जनता ने थम्स अप दिया, तो वी एक्सटेंडिंग, ठीक है? Now, after that scam happened, a lot of manipulation of shares, a lot of manipulation of data, a lot of manipulation of share market was happening. तो सरकार ने बोला दोस्त हमको, we need an organization, we need an institution which controls, supervises and ensures कि भैया शेयर मार्केट में फ्रॉड्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज यहाँ तो जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। The money is invested by small investors like you and me. We do not have crores and crores of rupees, दोस्त. We have 5, 7, 10 lakh rupees as savings, जिसमें से 4-5 लाख रुपए अगर हम मार्केट में लगा रहे हैं, we need our money to be protected. We need somebody to keep a check कि भाई धोखाधड़ी ना हो जाए हमारे साथ। इसीलिए सेबी आया। सेबी आया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आया और ये चीज लेके आया। Now the question was, right, if it is helping the investors, how is it facilitating the business, bhaiya? We are talking about facilitation of businesses. You are saying ये तो business की अच्छे से tight करके रख रहे हैं भाई, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। How is it facilitating the businesses? Simple है दोस्त। If you are a business and you know that your country has a developed share market, somebody is keeping a check, there is fair competition, I can go to the share market as a business and ask for money from the public. For it, I will have to be compliant. For it, I will have to prove that I am a good company. For it, I have to submit my documents. For it, I have to constantly give reports to the general public कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ, I'm not doing any frauds, my accounts are not manipulated, my books are not manipulated, I'm not misusing your money, I am using your given money, your money in the right way. ये सब information सेबी कहते दो हमें। Every month, every quarter, I need this information. Submit your information. I will spread it across the investors so that investors can see where their money is being used, who is using their money. I want all of this data, those, right? You cannot fraud the general public. SEBI. As a business, it creates a fair field for me. If I am a good business, if I'm an ethical business, if I want to raise money, I can go to the share market and raise money. It's easy for the good businesses. It is extremely easy for the good businesses to go to the market and get money क्योंकि बैंक से सस्ता है। बैंक में इंटरेस्ट देना है, शेयर मार्केट में तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना है दोस्त, कोई पैसा नहीं देना है। डिविडेंड देना इज नॉट मैंडेटरी, डिविडेंड देना इज नॉट मैंडेटरी, वो तो चॉइस होती है कंपनी की, राइट? ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाइल्यूट योर ओनरशिप,
Now, those people who buy the shares are shareholders. They are going to help you when you have losses. वो आपका loss भी share करेंगे, वो आपका profit भी share करेंगे. You remember, so the shareholders sink and swim together, right? As a business, मजे आ गए दोस्त. I am getting free money. मुझे free का पैसा मिल रहा है because people trust my business. I am a good business. People trust me as a businessman or businesswoman. I'm a good personality. My business is doing great. People have trust in my business. People see a future of my business, and वो पैसा लगाना चाहते हैं. आओ दोस्त लगाओ, मुझे फ्री में पैसा मिल रहा है. बैंक से लेने जाऊंगा, the bank is going to charge me 15-17% loan का interest rate, which is a debt. I have to repay that, right? But शेयर मार्केट में तो मुझे कोई पैसा ही नहीं खर्चना है. इट्स फ्री मनी. आई जस्ट हैव टू मेक ऑल ऑफ यू शेयर होल्डर्स. लॉस होगा तो आपका भी लॉस है, प्रॉफिट होगा तो हम सबका प्रॉफिट है. आओ मिलके बिजनेस करें, राइट? That kind of an environment is facilitated by SEBI. That kind of an environment is facilitated by SEBI for the businesses to raise funds. And that is where the facilitation of business by SEBI happens. ठीक है? ये है SEBI. ये है SEBI. अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, okay? Now, SEBI was established by the government of India in 1988 and given statutory powers in 1992. याद है scam 1992, right? With the SEBI Act of 1992. The controller of capital issues was the regulatory authority before SEBI. SEBI से पहले जो शेयर मार्केट्स में regulatory body थी, उसका नाम था Controller of Capital Issues. In 1992, SEBI was given the statutory powers, okay? Securities and Exchange Board of India. SEBI, Securities and Exchange Board of India. Cool? Very cool. A chairman. We are studying about the board of SEBI. भैया SEBI के board में है कौन कौन? Number 1, a chairman who shall be appointed by the central government. A chairman, male and female, anyone. वो chairman word है, right? But it can be anyone who shall be appointed by the central government, and he or she, okay? I don't know if you guys have read in law or not. There is a general gender clause in every law, okay? I'm giving you an extra information. If you're interested, read about it on Google. In every law that is written across the world, right, there is a clause which is inherently understood, which is called the general gender clause, okay? Now, what happens in this is, this means wherever in the law, wherever in an act, even in wherever in a document, the word he, the pronoun he is used, that is to be meant he, she, / whatever, right? It is open to all genders. It is to be interpreted as all genders, okay? यहाँ पे भी वही है. एक्ट में, एवरी एक्ट में आप लॉ में पढ़ोगे, आप किसी कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे, राइट? जहां भी ही यूज होता है वो जनरली इज यूज्ड फॉर ही एंड शी बोथ, ओके? देयर इज अ जनरल जेंडर क्लॉज which says this for every law in the world, okay? A chairman who shall be appointed by central government, and he shall be person of ability, integrity and standing in the field of securities market, law. ये नान्स लिखा है, ये फाइनेंस है, ठीक है? This is finance, accountancy, economics and administration, etc. Right? Board also has 2 members. It also has 2 members from amongst the officials of Ministry of Central Government dealing with finance and administration of the Companies Act, who shall be nominated by the central government, okay? 2 members from amongst the officials of the Ministry of Central Government dealing with finance and administration of the Companies Act, who shall be nominated by the central government, right? Cool. Responsibilities of SEBI. SEBI की भैया responsibilities क्या है? SEBI की responsibility बड़ी simple है. इसको याद करने का तरीका और भी simple है. To protect, to promote, to regulate and related matters. To protect, to promote, to regulate
and related matters. 4 responsibilities of SEBI: प्रोटेक्ट करो, प्रमोट करो, रेगुलेट करो और इन सबसे रिलेटेड सब कुछ करो. Protect karo the interest of the investors. You and me are investors. To protect the interest of the investors, number one responsibility. To promote, number two is to promote the development of securities market ताकि और businesses आके यहाँ पे money raise कर पाए. People can raise funds in the share market. They have to promote the development. Number three is regulate the existing securities market. To regulate means to supervise. कोई fraud तो नहीं हो रहा ना दोस्त, right? And all related matters of above 3 lines, right? To protect investors, to promote the development of securities market, to regulate the securities market, and all related matters. ये है responsibilities of SEBI. ठीक है, समझते हैं इसको. SEBI is responsive to the needs of 3 groups, right? SEBI is responsible for 3 groups. The issuers of securities, that is companies, जो share market में shares अपने आके बेच रही हैं या खरीद रही हैं. Investors, that is you and me. And third is intermediaries, the brokers, the mutual fund, Zerodha, Grow, ICICI mutual fund, HDFC mutual fund, पराग पर एक म्यूचुअल फंड, राइट? ये म्यूचुअल फंड वाले और जो ब्रोकर्स हैं, राइट, जितने ब्रोकर्स हैं, ईटी मनी, ये वो, जिनसे हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं, द ब्रोकर्स, इनको संभालती है. इन्वेस्टर्स, यू एंड मी, हमें संभालती है. एंड सेबी ऑल्सो is responsible for the companies who are coming in the share market to sell their shares, to raise money from the share market, right? Promote, protect, regulate, all related, and it is responsible to three groups of people. The 3 groups of people are the issuers of securities, that is companies, the investors of securities, and the intermediaries. Issuers, investors, intermediaries. Issuers, investors, intermediaries. In 3 groups ko SEBI is responsible for. Okay, issuers of securities, investors, you and me, and the market intermediaries, that is brokers and mutual funds. ठीक है जी, कूल है. ओके, आगे चलते हैं. The 3 functions of SEBI. SEBI के पास 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं. ओके, SEBI के 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं. एक होता है क्वासी लेजिस्लेटिव, एक होता है क्वासी जुडिशियल, और एक होता है क्वासी एग्जीक्यूटिव. भाई साहब, इतना टेक्निकल क्यों बना रहे हो? थोड़ा इजी कर दो. ठीक है सर, कर देते हैं. क्वासी लेजिस्लेटिव. अब सेबी इज द सरकार ऑफ शेयर मार्केट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, अभी सेबी को सोचो कि सेबी इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेबी इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ शेयर मार्केट्स इन इंडिया. तो इसके पास क्या क्या पावर होनी चाहिए? अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सो इट शुड हैव पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मार्केट. हाँ जी, होनी चाहिए. somebody is doing something wrong in the market, उसको पनिशमेंट देने की ताकत होनी चाहिए. हाँ जी, होनी चाहिए. ठीक है जी, दे दी. एंड उसके पास ताकत होनी चाहिए अगर उसको किसी पे शक हो. पुलिस, राइट? एक कंट्री में पुलिस होती है आपको चेक रखने के लिए कि आप रोड अपना रेड लाइट क्रॉस तो नहीं कर रहे हो, आप यू आर नॉट डूइंग एनी इलीगल स्टफ और अनएथिकल, मर्डर केसेस तो नहीं हो रहे हैं, चोरी चकारी तो नहीं हो रही है, राइट? पीपल आर फीलिंग सेफ. उसके लिए पुलिस होती है, राइट? देन देयर इज अ कोर्ट ऑफ लॉ. अगर कोई प्रूव हो जाता है कि इसने गलत किया, देन दे टेक टू द कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, and then they prove that they have done wrong and they get punishments, right? And there is legislative, parliament house होता है जहां पे लॉ बनता है देश का, राइट? एक लॉ बनता है, पुलिस उसको चेक करती है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ कोई कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, राइट? सेम चीज सेबी डज, the same cheese SEBI does for the share markets in India, right? And why is it called quasi? Quasi means, तो चार्ज कर लो आर्यन, राइट? कह रहे बैटरी खत्म हो गई, मेरे बोलने की बैटरी खत्म नहीं हुई. Quasi means alike, similar to, right? Quasi means same, almost same को quasi बोलते हैं,
राइट, ऑलमोस्ट सेम किसी चीज को, लुक अलाइक को, सिमिलर को क्वासी बोलते हैं। ठीक, ठीक है। सो SEBI has three functions. Quasi legislative, it can make rules and regulations for the share market of India. Yes, it can. The second function is quasi judicial. If it finds somebody has done wrong and it is proved, it can give punishment कि आज से आप शेयर मार्केट में आपके शेयर्स कैंसिल, आप शेयर मार्केट ऑफ इंडिया में शेयर्स नहीं कर सकते, यू आर आउट ऑफ शेयर मार्केट। वो जजमेंट दे सकती है, हाँ जी दे सकती है। कॉसी एग्जीक्यूटिव, उसको लगता है अदानी के शेयर में कुछ गड़बड़ है, टाटा के शेयर में कुछ गड़बड़ है, किसी और की कंपनी की शेयर्स में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, somebody is manipulating, somebody is giving the wrong information, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉफिट्स गलत बता रहे हैं, खर्चे गलत बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करो, इनकी बुक्स मंगवाओ पिछले 10 साल की, इनका पूरा बैकग्राउंड चेक करो, राइट। कॉसी एग्जीक्यूटिव, पुलिस वाला काम, conducts investigations and enforcement actions in executive function. It can. It has three quasi functions. Quasi legislative makes rules and regulations. Quasi judicial gives punishments, takes or gives orders. This is to be done. Quasi executive investigations and enforcement actions against things it feels is not right for the share market for three people. ये तीनों फंक्शन ये किसके लिए कर रही है? ये तीनों फंक्शन ये इन तीनों के लिए कर रही है, इशुअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एंड मार्केट इंटरमीडिएट्स के लिए। सेबी अपना सारा काम तीन लोगों के लिए कर रही है, राइट। सारा काम बोले तो ये वाले काम, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, ये तीन काम ये इन तीन लोगों के लिए कर रही है दोस्त। ठीक है, ग्रेट। टू प्रोटेक्ट, और ये सब ये क्यों कर रही है, और ये सब झमेला फंक्शंस इन सब क्यों कर रही है? टू प्रोटेक्ट, promote and regulate. Quasi legislative, quasi executive, quasi judicial is the function it is doing for three people, which is issues, investors, intermediaries. Why? To protect, promote and regulate share markets, the securities markets in India, Securities and Exchange Board of India. Right? Okay. Now the question is, इस सब से बिजनेस को कैसे हेल्प मिल रही है भाई? इस सब से बिजनेस को हेल्प कैसे मिल रही है? नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट का मतलब है डेवलप कर रही है मार्केट को, सो दीज कंपनीज आर एबल टू एक्सेस कैपिटल मार्केट फॉर देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट। समझ आ गया हमें? कंपनीज कैन कम टू शेयर मार्केट टू रेज मनी, राइट। नंबर 2, facilitates overseas entities desirous of participating in Indian capital markets. Globalization, FDI, IFDI, ये भैया पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, वी आर स्टडीड IFDI, तो पढ़ के आ रहे हो चैप्टर 4 में। ग्लोबलाइजेशन, LPG, ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में। How are they doing investment in India in globalization? They're coming to Indian share market. They're buying the shares of Indian companies. Those SEBI is helping that. SEBI is facilitating the business that people from foreign can come and invest in your business, dost. We are giving you that opportunity. Do such good businesses, build such good businesses that people from foreign countries want to invest in your business to make money. Facilitation of business. Number 3, responsible for investors' faith in functioning of the capital markets. अगर इन्वेस्टर को भरोसा हो गया कि the companies in the share market is where I can go and invest my money, businesses के लिए it becomes more easy to get free capital, right? फ्री का पैसा मिलना और आसान हो जाता है बिकॉज इन्वेस्टर्स हैव ट्रस्ट कि कुछ गलत होगा तो सेबी इनकी बैंड बजाएगा, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सेबी बैठा है, सेबी इज प्रोटेक्टिंग अस एज इन्वेस्टर्स इन द शेयर मार्केट, राइट? सेबी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस, दैट इज व्हाट दे हैव एंश्योर्ड। और ये चीज बिजनेस को अगर पता चल गई तो बिजनेस कह रही है इसकी वजह से मोर पीपल वांट टू इन्वेस्ट एंड इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू रेज मनी इन द शेयर मार्केट। ठीक है जी, वेरी गुड, एकदम बढ़िया है, बढ़िया है। आगे समझ सर सेबी।
और नहीं कर रहे वैष्णवी, मैं भी बंद कर रहा हूँ। 1:13 हो गया। आई टोल्ड यू 15 minutes. वी आर गोइंग टू स्टॉप इन नेक्स्ट 2 minutes. जस्ट आंसर दिस लास्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन. जस्ट आंसर दिस लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड वील स्टॉप टुडे. राइट, अब बाकी हम कल करेंगे. बस ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर देते हुए बाय बाय कर देंगे. इन्वेस्टर्स, इंटरमीडियरीज, इशूअर्स. राइट, सिंपल है, वेरी सिंपल है. बहुत ही सिंपल है. majority जनता is saying government because that is the right answer anyway. और कोई ऑप्शन है ही नहीं. Right, the correct answer is also government organizations. And with that, let us stop for today here. Let's take a pause here. We'll continue tomorrow 11 a.m. sharp where we left off, which is SEBI complete हो गया. अब बाकी का chapter 5 कर लेंगे, कल दौड़ा देंगे. Right, great, cool. I'm happy people who are writing that you got the fantastic explanation, concept clear hai. I'm really happy to know that. Thank you so much. I'll just stay on for another 1 minute, right? For others who want to just go, जिनकी बैटरी खत्म हो रही है, जिनको इधर उधर जाना है, जिनके plans है, you can leave. Thank you so much for joining and being active. I'll see you tomorrow when we continue. I'm still here for 1 minute, right? If you have any questions, you can ask. लंबे questions हैं तो कल के लिए रखना please, right? लंबे questions है तो कल के लिए रखना, कल भी आ रहे हैं. छोटे मोटे questions I can answer right now. Otherwise, we'll go to tomorrow. Okay. Thank you everyone who's writing a thank you. Thank you so much. Perfect. All crystal clear. Happy weekend. Happy Saturday to you. Weekend कल फिर से class है. कौन सा weekend दोस्त? Perfect. All right, guys. Thank you so much. I'll see you tomorrow, 11 a.m. Same place, and we'll start with the next one, which is IRDI. All right. Thanks everyone. Take care. Thanks, Ashok ji.